गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है आपको? ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. इन दैट वी हैड रीच टू व्हाट आर कॉल्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स. कोई मुझे बताएगा व्हाई आर दीज इश्यूज कॉल्ड लो हैंगिंग फ्रूट्स? कितना समझ में आया आपको? इश्यूज विचार हाथ उठा करके बात करेंगे तो बेटर होगा, भीड़ में मुझे समझ में नहीं आता. हाँ, जल्दी से रिजॉल्व किए जा सकते हैं. और व्हाट एल्स? Why are the issues like Siachen and Sir Creek called low hanging fruits? लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब तो समझ में आ गया था ना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो इसी तरह की चीजों पे अटकते हैं जिनका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है. लिटरल मीनिंग, दीज आर द इश्यूज विच आर कंसिडर्ड टू बी easy to resolve, all right, that they can be easily resolved technically or otherwise. And second reason why they are called low hanging fruit, because India and Pakistan both have held negotiations on these issues, have talked about these issues. So it is understood that there may have been proposals pertaining to these issues. So combining these two factors, we say that these are issues which can be easily resolved. और idea एक ये है कि when these issues are resolved, then we may be able to move towards resolving other contentious or complex issues. एक बार छोटी सफलता मिल जाएगी तो आगे बड़ा काम कर पाएंगे, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं. हाँ, पीछे से किसी ने हाथ उठाया था? नहीं? जिन्होंने हाथ उठाया था उन्होंने ही मना कर दिया. चलिए, ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट सर क्रीक टुडे, देन वी विल सियाचिन टुडे, देन वी विल टॉक अबाउट सर क्रीक, then we will talk about the Kulbhushan Jadhav case, then we will talk about the CPEC, China Pakistan Economic Corridor, and then we will talk about the FATF. जितना हमको समझना है FATF के बारे में, ये चीजें हम आज करना चाहते हैं. So first of all, yesterday we had seen the map of Siachen. Any difficulty from that? What is the ridge line on which India maintains its presence in Siachen? What is the ridge line called? Saltoro Ridge. And what is the line demarcating India's position on Saltoro Ridge called? AGPL, Actual Ground Position Line. What is the military operation that India had conducted to control Siachen? Operation Meghdoot. तो ये चीजें आप याद रखेंगे. Now, what is the real issue pertaining to Siachen? We had understood that it is important because of its location and India maintains control over it. So there is one issue pertaining to Siachen which is of particular interest. It is called demilitarization of Siachen. Whether Siachen should be demilitarized or not. Alright, Siachen को demilitarize करना चाहिए या Siachen को demilitarize नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? फिर से वही कल वाली बात कि अगर आप कहते हैं कि हाँ या ना, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं होना चाहिए. हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए सियाचिन डिमिलिटराइज? So you don't trust Pakistan, that's why it should not be demilitarized. हाँ, पीछे से मोबिलाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, लॉजिस्टिकल इश्यूज. ठीक है, और सो स्ट्रैटेजिक पॉइंट कि हमारा स्ट्रैटेजिक नुकसान होगा. सो लेट्स सिंपली राइट अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू. तो टॉपिक बेसिकली हेडिंग होगा डीमिलिटराइजेशन. रोहन जैन सेज यस विथ एग्रीमेंट. दोनों को एक साथ करना चाहिए. आस्था सेज. अमित शर्मा सेज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड. ऑनलाइन पीपल आर ऑल्सो गिविंग देयर ऑप्शन, राइट? सो डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन. सो दैट इज द मेन इशू. The Siachen Glacier region, the Siachen Glacier region
is strategically significant. The Siachen Glacier region is strategically significant. And since 1984, India has maintained control over the area. And since 1984, India has maintained control over the area. However, since the late 1980s, the issue of demilitarization, of Siachen has been formally and informally. The issue of demilitarization of Siachen has been formally and informally raised in interactions between India and Pakistan. Has been formally and informally raised in the interactions between India and Pakistan. It has been observed that both sides have considered the possibility of demilitarization, as a step towards normalization of relations, There are three broad reasons. Behind such a consideration. There are three broad reasons behind such a consideration. There are three broad reasons behind such a consideration. A, high human cost of maintaining military presence at Siachen. High human cost of maintaining military presence in Siachen. High human cost. B, high economic cost of maintaining military presence in this difficult region. High economic cost of maintaining military presence in such a difficult region. And thirdly, demilitarization of Siachen.
is considered to be a step which may build trust between the two countries, So basically 3 points हमने कहा. First is high human cost. So you can look at it from two perspectives. One, it's a difficult region. So the major difficulty is the climate itself. All right, the climatic conditions, the weather conditions in this region are difficult. So human cost means a day-to-day existence of the soldiers is difficult, right? From drinking water to food to sanitation, all these basic needs, maintaining them is very difficult in that climate. So it is widely acknowledged that day-to-day life of soldiers is very difficult at Siachen. So that is the human difficulty at the human level. Second difficulty that you would see in this point is that fatalities, meaning soldiers losing their lives, has not been because of active fighting, but because of incidences such as avalanches. All right. So खराब मौसम की वजह से ज़्यादा जाने गई हैं इस इलाके में. Right. So that is the second difficulty. एक तो day-to-day existence is difficult. That is the human cost. And second is the fatalities, the loss of life because of accidents due to climatic factors such as avalanches. Second, many people say that anywhere between 5 to 8 crores, some people say 12 crores a day is the expense of maintaining military presence, daily expense of maintaining military presence at the Siachen Glacier. But that's a minor point. When you are talking about national security, you generally don't talk about economic points as primary points. So that's why it is our second point. And third is the diplomatic point, that it has been widely observed by many. अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, लेकिन मतलब यही होता है कि अगर सियाचिन को रिजॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है कि हम एक बेसिक ट्रस्ट बना पाएंगे जिसके आधार पे हम आगे मूव कर पाएंगे. राइट. सो इट वुड बेसिकली जनरेट ट्रस्ट. सो दीज आर द थ्री आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर गिवन. राइट. सो देन देयर हैव बीन पीरियड्स इन व्हिच this issue has been negotiated. So formally, informally, I said, right? Sometimes people are writing in the newspaper, sometimes when they are interacting, they are informally talking about it, but governments have also talked about it. So for example, during the composite dialogue process, for a brief period, Ambassador Shyam Saran was the foreign secretary. Ambassador Shyam Saran in his book writes that he had the responsibility of preparing a plan, and he had visited the Siachen Glacier, and he asked a young soldier there, a young army officer there, that if the government decides to demilitarize Siachen, what would be your reaction? So he said, I couldn't be happier because the day-to-day existence itself is difficult. So there was a willingness at the level of Ministry of External Affairs to consider vacating Siachen, demilitarization of Siachen. Now you have to take the view of the National Security Advisor, you have to take the view of the military as well, the army as well. जब भी policy बन रही है आप सबसे बात करेंगे. So for a brief while there was a process of preparing a plan for demilitarization, but ultimately did not happen because composite dialogue process itself broke down. So furthermore you will write even after the issue was discussed, as part of the composite dialogue process, no breakthrough could be achieved. Even after the issue was discussed at the composite dialogue process, no breakthrough was achieved. The primary reason for this
can be identified as one, the lack of trust between the two sides, persisted. 2, fundamental difference over the method of demilitarization. Fundamental difference over the method of demilitarization. Fundamental differences over the method of demilitarization could not be overcome. Fundamental differences over the method of demilitarization could not be overcome. And third, the composite dialogue process itself broke down. Composite dialogue process itself broke down. The composite dialogue process itself broke down. Due to political changes in Pakistan and the continued linkage between terrorist activities in India and the continued linkage between terrorist activities in India and the state and non-state actors in Pakistan, It can be argued, paragraph change करके, it can be argued that though there are valid reasons supporting the call for demilitarization of Siachen, there are valid reasons supporting the call for demilitarization of Siachen. Under the prevailing circumstances, such a breakthrough is not possible. Such a breakthrough is not possible. In the future, the demilitarization of Siachen, would depend upon cessation of terrorism, and improvement of communication between India and Pakistan, whenever such a possibility is entertained, the following
the following method of demilitarization would be preferred by India. The following method of demilitarization would be preferred by India. One, the following method of demilitarization would be preferred by India. One, demarcation of the AGPL, demarcation of the actual ground position line. Demarcation of the actual ground position line. Demarcation of the actual ground position line on the ground and on the map. Demarcation of the actual ground position line on the ground and on the map. On the ground and on the map. Demarcation of the actual ground position line on the ground and on the map. Second, a joint verification agreement. A joint verification agreement. A joint verification agreement between the competent authorities. A joint verification agreement between the competent authorities. And thirdly, redeployment of troops or redeployment of armed forces from the region. Redeployment of armed forces from the region. So, redeployment of armed forces from the region. So, basically what we are saying is this, that A, India controls Siachen, B, the issue has been of demilitarization. There are certain valid reasons for entertaining the idea of demilitarization, but under certain circumstances it is not possible, it has not been possible. But whenever this happens, India has considered the possibility, and India had proposed in the past that first AGPL should be demarcated on the ground, meaning on the Saltoro Ridge. कुछ identification markers हम लगाएं, pillars लगाएं, उसके बाद on the map it should be marked, and then there should be a diplomatic agreement to that effect कि कल को फिर ये नहीं कहने को हो जाए, पाकिस्तान ये नहीं कहे कि नहीं हम नहीं मानते, all right, और उसके बाद फिर demilitarization होगा. So whenever demilitarization is being considered, the question is not yes and no. The question is for what purpose, what is the benefit, and what is the method, what is the process that should be followed. So this is something that would be preferred by India. Pakistan would say that let's demilitarize. India would say no, first let's identify our position and then mark it. क्यों? Because we don't trust you. In 1999 when we vacated the heights of Kargil, Kargil एक ट्रेडिशन था, एक कन्वेंशन था कि ठंड में भाई आप ऊंचाई छोड़ के नीचे की तरफ आ जाते थे. So in 1999 when we vacated the heights of Kargil, unexpectedly Pakistan captured it. So that was basically breach of trust. So now we don't trust you. So now in this area, if there has to be demilitarization, our position has to be very clearly demarcated on the ground, on the map, and in an agreement. So that is the process that we would prefer. But demilitarization तब तक नहीं हो सकता जब तक कि फंडामेंटल जो कंसर्न है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व नहीं हो जाए. और फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, कंटिन्यूड support to terrorism by Pakistan. So at any point in time that would be the position, that it is desirable for certain reasons. है ना, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में आप देखें तो आपको लगेगा कि ऐसा होना चाहिए. सिंपल बात है, सोल्जर्स लिव अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ एट सियाचिन. सो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इफ देयर इज अ सर्कमस्टांस इन विच द लाइफ ऑफ सोल्जर्स कैन बी मेड easier, but then ultimately that cannot be the only concern. There are other concerns which are also applicable. So that's why this write-up. Redeployment मतलब कि वहां जो लोग हैं उनको कहीं और डिप्लॉय करना, पीछे की तरफ लाना. तो वो बेसिकली वो भी म्यूचुअली एग्रीड पोजीशन हो सकती है कि हम एग्री करेंगे कहाँ पे रहेंगे, या फिर इंडिया खुद से डिसाइड कर सकता है. तो रीडिप्लॉयमेंट का मतलब है बेसिकली फिर से डिप्लॉय करना, जो सोल्जर्स वहां पे हैं उनको कहाँ पे रखना है ना.
रीडिप्लॉयमेंट की बात हम चाइना के बॉर्डर पे भी कर रहे हैं इतने दिनों से, रीडिप्लॉयमेंट होना चाहिए। मोबिलाइजेशन हो गया, सोल्जर्स आ गए दोनों साइड से। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है कि भाई पीछे हटें, तो पीछे हट के कहाँ जाएं? हाँ, मतलब सिंपल बात है कि हम डीमिलिटराइजेशन का मतलब है कि वहां से फोर्सेस को हटाना, तो फोर्सेस को हटाएंगे तो रीडिप्लॉय करेंगे ना। तो बेसिक बात ये डीमिलिटराइजेशन की इसलिए बार बार आती है क्योंकि एवलांचेस होते हैं। अभी कुछ साल पहले एक एवलांच हुआ था, उसमें हमारे बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, जवान थे, वो बर्फ के नीचे दब गए थे, तो काफी रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला। तो सोल्जर्स की लूजिंग लाइफ लिम्ब बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द वेदर, तो इसलिए एक कंसिडरेशन बना रहता है। और ऐसा मानते हैं कि अगर ये सॉल्व कर पाएंगे तो फिर और भी इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इशू इज द इशू ऑफ सर क्रीक। आप सभी के क्लास मटेरियल के अंदर एक मैप होगा, है ना? द इशू ऑफ सर क्रीक, that is also called a low hanging fruit, the issue of Sir Creek. So let's simply understand the issue of Sir Creek for what it is. If you look at the maps in your material, you will find that Sir Creek is a small sliver of territory, छोटा सा एक इलाका है between the Gujarat state in India and the Sindh province of Pakistan. All right, so it is between this region that we are talking about. Sir Creek is between Gujarat and Sindh. So where is the issue? The issue is that in this area, in this region, the boundary remains undemarcated. Boundary mutually demarcated nahi hai, boundary remains undemarcated. Now where is the problem? So the genesis of the problem, कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं, lies back to the British period. Around 1908, 1908 के आसपास, 1908, this issue came up. What was the issue? The issue was who has the right over the resources in this region. So the primary contention was between the Sindh province in the British period, which was under the Bombay presidency at that point in time, and the ruler of Kutch, the larger Kutch region, right? So that was basically the issue. So then 1908 this issue came up, and then in 1913 the British government conducted surveys, and 1914 the British government came up with a government resolution or a government order. So this government order then stipulated who has control over this area. So paragraphs 9 and 10 of this particular government order basically are of importance. इन्हीं को लेके India and Pakistan basically have contention. So the government order said that this part of Sar Creek is basically with the Sindh province, right? And then clarified some other issues in the government order. But subsequently after partition, Sindh went to Pakistan and Gujarat became a state in India. So the clarity of border in this particular region became contentious. But then this issue was ignored because there was this larger issue of determining the boundary in the larger Run of Kutch area. Run of Kutch mein border decided nahi tha. Run of Kutch is a large area. So then what happened? 1965, India and Pakistan fought a war. And then after the war, and fighting had taken place even in the Kutch, Run of Kutch region. So after the war, in 1967, by arbitration, India and Pakistan were able to decide their boundary in the larger Run of Kutch region. All right, in the larger Run region. 90% of India's claims was accepted in the arbitration, 10% of Pakistan's claim was accepted. So Run of Kutch boundary is determined. So that is the land boundary. All right. Now Sar Creek is like a water body. So here again the differences persisted. It was a small region, so differences persisted. Since there were other major issues which had dominated India-Pakistan relations, this particular region remained neglected.
However, in the 1990s, 1990 के बाद से India and Pakistan started talking about resolving the boundary in this particular region with an eye on ultimately resolving the boundary in the maritime domain. All right. So that is where the conversation started. That is where the negotiations started. What should we do? And then Sir Creek became an issue in the composite dialogue process, a major issue in the composite dialogue process. So then India and Pakistan conducted joint surveys of this region, exchanged maps of this region, and entertained the idea of demarcating the boundary in this particular region. Alright, but fundamental differences still persisted, so that's why the issue was never resolved. But certainly extensive negotiations, ground surveys, exchange of maps have taken place. In 2012, the last round of negotiations took place. At that point in time also, the expectation was that the issue can be resolved easily. Alright, so ये हम मान के चलते थे. Now, when you look at the map, you will find that India's position is marked by what is called the red line. All right, India's position is marked by the red line. All right, and Pakistan's position is marked by the green line. ये नाम है इनका, red line and green line. They are called red line and green line. So let's understand what is red line and green line. कोई आपको मैप ड्रॉ करने के लिए बोल नहीं रहा. India's position, first of all, you will remember, is demarcated by red line. है ना? India's position is demarcated by red line. So what is this red line? India says, according to India, the boundary in Sir Creek should be middle of the channel. All right, it should be in the middle of the channel. So India does not say that the entirety of Sir Creek should belong to India. India का ये नहीं कहना है कि पूरा Sir Creek India को मिलना चाहिए. India का क्या कहना है? Where should be the boundary? Middle of the channel. So that is India's position. The red line is India's position, which says that the boundary should be middle of the channel. Green line demarcates Pakistan's position, which says what? That the boundary should be eastwards of the channel, meaning the entirety of Sir Creek should belong to Pakistan. आगे बैठ के ये करने की जरूरत नहीं है, पीछे बैठ के आप ये सब कर सकते हैं. फोन देखना, आपस में बात करना, पीछे लोग इसलिए चुन के बैठते हैं. तो बेसिकली रेड लाइन is India's position, green line is Pakistan's position, and red line means demarcation of the boundary middle of the channel, and green line means demarcation of the boundary eastwards of the channel, meaning entirety of Sir Creek belongs to Pakistan. That is what Pakistan's claim is. So India is not claiming entirety of Sir Creek. India is saying that the boundary should be middle of the channel. अब यहाँ पे कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है. Why? So Pakistan's position is based on what the government order of the British period said, paragraphs 9 and 10. All right, 8, 9, 10, these are important paragraphs. India says that the same paragraphs also say that Sir Creek is a navigable body of water. है ना? Sir Creek is a navigable body of water. That is what India says. So thereby the position is that the boundary should be middle of the channel. Pakistan says, and also India says, that in 1925 there are some maps which show the demarcation of the boundary middle of the channel. So India दो चीजें कहता है कि the government order itself said that the Sir Creek is a navigable body of water. So if we apply modern principles, then the boundary should be middle of the channel because it is a navigable body of water. And then there are some maps dating back to 1925 which also demarcate or show that the pillars were in the middle of the channel. The boundary demarcation was in the middle of the channel. So that is what India is saying. This is what India's position is, that we don't accept Pakistan's position eastwards of the channel. It can't be, it should be middle of the channel. So that is the difficulty. Now the difficulty also becomes complex because since the 1990s it has been argued that this region may have significant reserves of hydrocarbon, कि यहाँ पे oil और gas मिलने की संभावना है. So this issue becomes all the more complicated. India proposed to Pakistan कि if Sir Creek, demarcation of boundary in Sir Creek is not possible, then using the technical aspects of international law on sea,
हम अपनी मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट पाकिस्तान डिड नॉट एग्री अपॉन. पाकिस्तान सेड कि फर्स्ट लेट्स हैव बाउंड्री डिमार्केशन इन सर क्रीक. सो दिस इशू remains pending but is considered to be a low hanging fruit because enough conversation has taken place, enough negotiations have taken place, talks have taken place, surveys have taken place, maps have been exchanged, right? Only political conditions, conducive political conditions are required wherein some kind of compromise can be made. All right, and India has been willing to compromise. Why? Because being a larger country, we would like to stabilize our periphery rather than, let them be a source of problem. So that is what we are going to write now about the Sir Creek issue. So first you can think of a question. Why is the Sir Creek dispute, why is the Sir Creek dispute considered a low hanging fruit in India-Pakistan relations? Why is the Sir Creek dispute considered a low hanging fruit in India-Pakistan relations? Right? Why is the Sir Creek dispute considered a low hanging fruit in India-Pakistan relations? So first of all, if you read the class material also, you will get this information. Otherwise, you can write it also. Sir Creek is a 96 kilometer long estuary. And it is very important to note this because this is what India's position is. Pakistan का कहना है कि Sir Creek is a marshy land, not navigable. But India says Sir Creek is navigable. All right. On this technicality, most of India's position is based. So Sir Creek is a 96 kilometer long estuary, strategically located on the borders, between India and Pakistan, and also the Arabian Sea coastline, strategically located on the borders between India and Pakistan and also on the Arabian Sea coastline. The issue of demarcation of boundary remains pending. The issue of demarcation of boundary remains pending. However, it has been a part of negotiations. It has been a part of negotiations since 1990s. It has been a part of negotiations since 1990s. And was included in the composite dialogue process. Furthermore, joint surveys and exchange of maps of the area. Exchange of maps of the area. Between the two countries has taken place, and when the last rounds of negotiations took place in 2012, both sides had expressed the desire to resolve the issue at the earliest. And when the last rounds of negotiations took place in 2012, both sides had expressed the desire to resolve the issue at the earliest.
Thus, given the long period of negotiation, and exchange of documents in the past, given the long period of negotiations and exchange of documents in the past, this issue is considered to be a low-hanging fruit. This issue is considered to be a low-hanging fruit. This issue is considered to be a low-hanging fruit. In this relation. The difference between India and Pakistan, on the exact alignment of the boundary, in this region is represented by the ideas of red line, and green line. India argues that the boundary in Sir Creek should run through middle of the channel. This position is based on the understanding that Sir Creek is a navigable body of water. This position is based on the understanding that Sir Creek is a navigable body of water, and thereby applying the principle of Thalweg. Thalweg is Thalweg, and thereby applying the principle of Thalweg, Thalweg, applying the principle of Thalweg, the boundary should be drawn in the middle of the navigation channel. तो क्या कहा हमने कहा कि रेड लाइन represents India's position. It is based on the idea that Sir Creek is a navigable body of water. So thereby a principle of international law which is called Thalweg principle. Thalweg principle says that if the matter is about a boundary in a navigable body of water, ideally if both sides agree, the boundary should run in the middle of the navigation channel, right? So अगर एक लेक है तो मिडिल ऑफ द नेविगेशन चैनल जहां जो भी रूट शिप्स या बोट्स इस्तेमाल करते हैं नेविगेट करने के लिए, रिवर है तो बीचों बीच मीनिंग वेर एवर द डेप्थ इज, ऑलराइट, द डीपेस्ट पार्ट. So basically middle of the navigation channel is the principle that India uses. To support its contention,
to support its contention, India refers to the 1914 British government order, and also some maps dating back to 1925, and also some maps dating back to 1925. On the other hand, the green line which represents Pakistan's position, also bases its claim on the reading of the British government resolution, and calls for, on the basis of the British government resolution, and calls for an eastwards demarcation of boundary, Pakistan argues Sir Creek to be a marshy land and not navigable. Pakistan argues Sir Creek to be a marshy land and not navigable. Despite these differences, a resolution of Sir Creek issue is considered to be desirable. Despite these differences, the resolution of the Sir Creek issue is considered to be desirable for its larger scope. Now, what is that scope that we are talking about? This can be understood through the following points. One, resolution of the Sir Creek issue is important for the ultimate maritime boundary demarcation, between India and Pakistan, to given the presence of a significant fishing community,
and the instances of, given the presence of a significant fishing community and the instances of arrest of the fishermen, by both sides for violating their maritime space, it is important to resolve the Sir Creek issue. It is important to resolve the Sir Creek issue. To bring clarity and ease of living, for this community. To bring clarity and ease of living for this community. Thirdly, और अगर आप ABC कर रहे हो तो C. छूट गया किसी का? सेकेंड पॉइंट कितना लिखा है आपने? किसका सेकेंड पॉइंट छूटा? Second point is very simple, that there is a significant fishing community in the region and there are instances of arrest of fishermen by both sides. They are accused of violating maritime space and they are arrested. Indian fishermen are arrested by Pakistan, Pakistani fishermen are arrested by India. So if boundary is demarcated in this region, what would happen? It would bring clarity and ease of living for the fishing community. Thirdly, C. Thirdly और C, आप जो भी लिख रहे थे. Resolution of Sir Creek issue would also pave way for, development of resources in the region. It has been estimated that this region may have large reserves of hydrocarbon. Petroleum इसका मतलब है hydrocarbons. Fourthly or D, resolution of the issue would help in strengthening India's coastal and maritime security. Resolution of the issue would help in strengthening India's coastal and maritime security. And lastly, the last point, the region is close to the hotbeds of drug trafficking. Resolution of Sir Creek dispute
resolution of Sir Creek dispute may aid in, resolution of the Sir Creek dispute may aid in combating this transnational organized crime. Resolution of the Sir Creek issue may aid in combating this transnational organized crime. So basically, if you see on India's borders, both borders, we have some hotbeds of drug trafficking. What are they known as? In the east of India's border, close to northeastern states, you have Golden Triangle. What is Golden Triangle? Myanmar, Laos and Thailand, right? So this is the hotbed where opium is grown and then drug is processed, and then drug trafficking is quite active in this region. And on the northwestern border, what do we have? The Golden Crescent. The Golden Crescent, which is Afghanistan, Iran and Pakistan. So that's why the last point refers to that since there is lack of clarity, contention, so and corruption also, so drug trafficking happens. And then also it was reported, maritime security, coastal security, that the terrorists who came from Pakistan and conducted attacks on Mumbai had hijacked a boat close to the Sir Creek region, a fishing boat close to the Sir Creek region. So if there is clarity on this, management of all these issues would become important, and that's why India is also keen on resolving this issue. But it would not be resolved unless the right circumstances are there. So this is the Sir Creek issue. You would not forget that for India, the red line is position, which is mid of the channel, which is based on Sir Creek being a navigable body of water, and that's why India says principle of Thalweg should be applicable. So if you don't remember anything else, remember these 4 points. What is India's basic position? Why India says that the boundary should be middle of the channel? India is not willing to accept Pakistan's position that entirety of Sir Creek should belong to Pakistan. So these are the two low-hanging fruits, meaning easy to resolve issues in India-Pakistan relations. Now we move towards what is called the Kulbhushan Jadhav case. All right, the Kulbhushan Jadhav. What is the present status quo of Sir Creek? India and Pakistan both maintain their claim. India continues to patrol this particular region, but there is no formal demarcation of boundary. Formal demarcation of boundary नहीं है यहाँ पे. तो पेट्रोल करते रहते हैं. इंडिया पेट्रोल करता है, अपना क्लेम पेट्रोल करता है इंडिया, है ना. कोई एक्टिव फाइटिंग भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कोई एक्टिव फाइटिंग हो. ऑल राइट. बट जो ऑफिशियली कहते हैं कि भाई ऑफिशियली दोनों साइड का एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना कि ये हमारी बाउंड्री है. दोनों साइड एक्सेप्ट नहीं करते कि कहां पे हमारी बाउंड्री है. सो दोनों अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं. नाउ द इशू ऑफ कुलभूषण जाधव, ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट्स. इस तरह के मामलों में तो सभी एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना, कि कुलभूषण जाधव, एवरीवन नोज हु कुलभूषण जाधव वाज. कोई फिल्म बनी क्या? सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कुलभूषण जाधव नाउ? क्या आ रहा है गूगल सर्च पे? What is the status of Kulbhushan Jadhav? Indian civilian arrested by. अभी क्या हो रहा है? Mr. Kulbhushan Jadhav, who is an Indian citizen, remains in Pakistani custody, and then the process, the judicial process for determining his final status is ongoing. Right now it is ongoing in Pakistan's courts. यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, 2-3 चीजें समझने की जरूरत है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं. अगर आपने क्लास मटेरियल पढ़ा हो तो भी शायद आप समझ पाए. 1, everyone knows the story. 2016, a gentleman by the name of Mr. Kulbhushan Jadhav in the month of March is arrested in Pakistan. At least that is the declaration, that Kulbhushan Jadhav has been arrested 2016 March from Balochistan. All right, and then Pakistan quickly says that Mr. Jadhav was involved in subversive activities. And then the claim also is that Mr. Jadhav is a
secret service operative from India. He is involved in espionage. Now, this being the case, the first consideration is that ultimately Mr. Jadhav is an Indian citizen. So the government of India says that A, there is no evidence that Mr. Jadhav was arrested from Balochistan. Right? The government of India says that there is no evidence that Mr. Jadhav was arrested from Balochistan. So thereby the claims are that Mr. Jadhav was actually kidnapped in Iran's part of Balochistan and then ultimately sold to Pakistani authorities, and then Pakistani authorities declared his arrest. And secondly, India says that Mr. Jadhav may have served in the Navy, but he was not acting at the behest of the government. He is a private citizen who has a logistics business in Iran. So that is why Mr. Jadhav was in Iran, from where he was abducted. So that is India's counter to Pakistan's position, that Mr. Jadhav was arrested from Balochistan and Mr. Jadhav is an Indian spy. Now, be that as it may, the case continued in Pakistan. So Pakistani military courts ultimately sentenced Mr. Jadhav to death. Death sentence de diya Mr. Jadhav ko. By 2017, death sentence to Mr. Jadhav was announced. India said that this is illegal. This cannot be done. Mr. Jadhav is not a spy, and Mr. Jadhav was not given access to certain rights. So then, in this kind of a scenario, what is the situation? Just understand, ये हमको भी पता है कि सारे जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में वो डिप्लोमेट्स नहीं हैं. They also know it कि हमारे भी सारे लोग डिप्लोमेट्स नहीं हैं. All right? It is common. Espionage is very common in this kind of a relationship. Both sides keep an eye on each other. Right? Because formally तो कई बार बातचीत होती नहीं, तो both sides would like to keep an eye on each other. So in these kind of scenarios, आपने कई बार देखा होगा कि India expelled a particular employee of the Pakistani consulate, and then Pakistan also expelled an employee of Indian consulate. ऐसा होता रहता है. So that is one way, right? We expel the diplomats, accusing them of espionage. So that is one way. Second way is you may exchange a spy for a spy. A spy for a spy can also be exchanged. ऐसा भी हो सकता है, informally ऐसे भी solve कर सकते हैं. तीसरा तरीका और क्या हो सकता है? मिलिट्री अटैक कर दें, स्पेशल ऑपरेशंस कर पाते तो कर लेते, स्पेशल ऑपरेशंस करें, तो ये पॉसिबल नहीं था. इन 2016 इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस actually were going through a very difficult phase, and Mr. Jadhav became a victim of that, right? So Pakistan made it a point that they would make Mr. Jadhav an example. So they basically issued a video of Mr. Jadhav in which Mr. Jadhav has confessed to being engaged in espionage, which India says was obtained through torture and under duress. That is what India's position is. And then किसी ने दिमाग लगाया होगा, क्या कर सकते हैं? समय, let's buy some time. So then in 2017, India went to ICJ, International Court of Justice. All right, International Court of Justice India चली गई, और वहां पे इंडिया ने क्या केस बनाया? इंडिया बेसिकली आइडेंटिफाइड द टेक्निकलिटीज रियली वेल, और एक बहुत ही टेक्निकल सा केस बनाया. तो इसीलिए पहली सलाह आपको यह है कि हर मामले में सलाह यह मत दीजिएगा कि इंडिया शुड गो टू आईसीजे. इट्स अ वेरी स्पेशल केस when there is no other option. All right. Generally, India avoids taking its issues with Pakistan or ideally with any other country to ICJ or an international forum. So ये obvious solution नहीं होना चाहिए हर चीज में कि हमको ICJ जाना चाहिए. पहले आप पोजीशन को समझ लें. क्यों? Because if we create this precedence, then Pakistan on every other day would go to ICJ. हर केस पे पाकिस्तान आईसीजे ही चला जाएगा. हर केस में पाकिस्तान कहेगा कि नहीं, हमको जो है इंटरनेशनल रेजोल्यूशन चाहिए. सो इंडिया वेरी क्लियरली डिस्करेजेस दिस. बट इन द केस ऑफ मिस्टर जाधव, इंडिया मेड द केस ऑफ पाकिस्तान वायलेटिंग एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट. ऑल राइट,
Pakistan, rather than making it a bilateral issue, India said that Pakistan has signed a treaty and Pakistan has violated that treaty. That treaty is called Vienna Convention on Consular Relations, VCCR, Vienna Convention on Consular Relations. ये क्या है? So basically, consulars are the representatives of their governments in another country, right? Either they are looking after the commercial interests, defense interests of their country in another country, or they are looking after the interest of the citizens of their country in another country. So consulars are representatives of one country in another country, right? So that treaty defines the rights, obligations, privileges of consulars. डिप्लोमेटिक रिलेशन चलाने के लिए एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो कुछ होनी चाहिए ना, तो वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इसी तरह की ट्रीटीज में है, वीसीसीआर, वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस. ऑलराइट, सो नाउ वन प्रोविजन, section 36 of the Vienna Convention on Consular Relations says that if a particular person is arrested or apprehended in another country, suppose आप कहीं और चले जाते हैं और आप वहां पे आप अरेस्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ करना मत, बट इन केस आप हो जाते हैं, डू यू हैव एनी राइट्स? ऑफ कोर्स यू हैव राइट्स. सो वन ऑफ द राइट्स इज दैट ए, योर कंट्री शुड बी इन्फॉर्म्ड, and B, you should have consular access, meaning you should be allowed to meet the representative of your country, right? So India said, और पाकिस्तान से यहीं पे गलती हो गई. A, first of all, Pakistan arrested Mr. Jadhav on 3rd of March. It says that it arrested Mr. Jadhav on 3rd of March. 3 मार्च को गिरफ्तार किया, पर बताया इंडिया को 25 मार्च को. So India says there was undue delay in informing India about Mr. Jadhav. And secondly, India said that provide us consular access. So India says that we made repeated requests to Pakistan to provide us consular access, to provide consular access to Mr. Jadhav, but Pakistan declined it. यहाँ पे इंडिया की पोजीशन, इंडिया का केस स्ट्रांग हो गया, because this is what Pakistan had done. पाकिस्तान को जल्दी थी, so he tried Mr. Jadhav, they tried Mr. Jadhav, they decided to give him death penalty. So this is something that what India argued in the court. Remember, ICJ never had the authority to revoke Mr. Jadhav's death penalty. ICJ डोमेस्टिक कोर्ट में जो हुआ उसको नहीं बदल सकता है ना. क्रिमिनल जस्टिस जो है वो डोमेस्टिक मामला है किसी भी देश का, राइट? बट अगर इंटरनेशनल ट्रीटी के मामले में कुछ हुआ है तो आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन बनता है बहुत सारे मामलों में. तो ये टेक्निकलिटी इंडिया ने वहां पे प्ले की. इंडिया मेड दिस केस. And then ultimately in 2019, the ICJ came up with a verdict wherein the ICJ accepted a few things. That A, Pakistan had violated its obligations under the VCCR. Vienna Convention on Consular Relations को लेके पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां थी, पाकिस्तान ने उसको वायलेट किया. B, the ICJ then said that Pakistan should allow consular access to India, to Mr. Jadhav. Consular access पाकिस्तान को प्रोवाइड करना चाहिए, ये आईसीजे ने कहा एज ए रेमेडी. एंड थर्डली, आईसीजे ऑल्सो सेड दैट इफेक्टिव रिकंसिडरेशन, रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ मिस्टर जाधव्स केस मस्ट बी अलाउड. ये तीन चीजें आईसीजे ने कही. ए, दैट पाकिस्तान हैज वायलेटेड इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर Vienna Convention on Consular Relations by not providing adequate consular access to Mr. Jadhav. B, the remedy then is that immediate consular access should be provided. And C, the ICJ also noted that effective review and reconsideration of Mr. Jadhav's sentence must be allowed. ये तीन चीजें ICJ ने कही. ICJ ने ये नहीं कहा कि हम रिवोक कर दे रहे हैं, क्योंकि वो उनका राइट नहीं था रिवोक करने का, बट उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आप उनको अलाउ करिए कि वो अपनी डेथ पेनल्टी को चैलेंज कर पाए. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग दैट हैड हैपेंड. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, पाकिस्तान अलाउड इंडिया कॉन्सुलर एक्सेस, बट इंडिया सेड दैट हमको अकेले मिलना है. अलाउ अस टू मीट मिस्टर जाधव अलोन, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स. ऑलराइट, सो दैट टसल वेंट ऑन. पाकिस्तान ऑफर्ड कॉन्सुलर एक्सेस टू मिस्टर जाधव. And then
the issue went to the High Court in Pakistan. So there the next issue became appointment of lawyer of Mr. Jadhav. India said either a neutral lawyer, a British lawyer, or an Indian lawyer should be allowed to represent Mr. Jadhav. That was the issue. So then that contention also continued. So then the Pakistani parliament passed a law which allowed for the appointment of Mr. Jadhav's lawyer. तो अभी वो केस कहां पे है? पाकिस्तानी जुडिशरी में. Meaning you cannot accuse Pakistan of exactly violating what the ICJ asked them to do. So it is still sub judice. It is still in process. All right. What would be the ideal solution of it? The ideal solution of it would be the government of Pakistan in its wisdom decides to release Mr. Jadhav. So इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे हम सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं, है ना, कि हम ये गुडविल में कर रहे हैं, हम ये ट्रस्ट में कर रहे हैं, चलो पीस की बात करते हैं. सो दैट इज द आइडियल सिनेरियो. बट वो होगा कि नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है. राइट अभी जो आईसीजे ने कहा वो प्रोसेस चल रहा है. इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ मिस्टर जाधव्स सेंटेंस. सो दिस इज अ कंटिन्यूइंग इशू. एज एंड व्हेन इट डेवलप्स इन पाकिस्तान कोर्ट तब क्वेश्चन आएगा कि अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है. सो इस सिनेरियो में इंडिया के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन गो टू द आईसीजे एंड आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन ऑफ द वर्डिक्ट. आईसीजे ने फैसला दिया है, उसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली मतलब क्या है, उसके क्लैरिफिकेशन को इंडिया सीख कर सकता है. दूसरा, इंडिया कैन गो टू द सिक्योरिटी काउंसिल saying that Pakistan has not followed the judgment of the ICJ. But Security Council में क्या होगा? China is there. So again very limited options. But इस पूरे केस से दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. वो क्या ध्यान में रखनी चाहिए? वो ये है. First of all, taking the Kulbhushan Jadhav case to ICJ is an exception rather than a rule for India. Secondly, generally India avoids taking its bilateral issues with Pakistan to the International Court of Justice. So हर चीज में आप ये solution नहीं देंगे. All right, because we will create a precedence. And thirdly, of this particular case, India made it a case of violation by Pakistan of its obligations under Vienna Convention on Consular Relations. All right, and thereby on the basis of that the ICJ found Pakistan to be violating Vienna Convention on Consular Relations. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस एग्जामिनेशन में. डोंट वरी अबाउट इट. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसमें राइट अप करने की जरूरत नहीं. बट द डिटेल्स आर देयर एंड ये एक ऐसा इशू है जिसके लिए आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा. पाकिस्तान के कोर्ट में क्या होने वाला है कल, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, पर अभी तक क्या हुआ है वो मैंने आपको बता दिया. इससे आप एक बेसिक फंडामेंटल चीज साथ में लेके चलेंगे कि हर चीज में सॉल्यूशन ये नहीं देंगे कि इंडिया को आईसीजे जाना चाहिए, और ये याद रखेंगे कि इंडिया आईसीजे क्यों गया. ऑल राइट, सो हियर वी टेक अ स्मॉल ब्रेक and after the break we continue with India Pakistan relations, but now we will move to CPEC. so CPEC में थोड़ा सा हमको देखना है, हम देखेंगे CPEC, और उसके बाद ultimately we will wrap up Pakistan today by simply looking at options to manage relations with Pakistan. Okay. Welcome back after the break. Settle down, and if you have any questions, you may ask those questions if there are any questions. अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ब्रेक के बाद वो सवाल पूछ सकते हैं. So basically somebody came to me and they asked about Geneva Convention, right? Geneva Conventions जो है basically are part of what are called humanitarian law, basically about war time. War time में how should be the conduct, about soldiers, their rights. For example,
जो केस था हमारा, आवर एयरक्राफ्ट वॉज शॉट डाउन बाय पाकिस्तान and Mr. Abhinandan was captured, and then in that kind of a case, if your soldier is caught in war, there is prisoner of war, जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस. तो ये चीज भी बहुत कॉमन होती है कि आप वियना की बात करते करते जेनेवा की बात करने लगते हैं. यही मैं कहता हूं कि एक्सपर्टीज इज नॉट रिक्वायर्ड, अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड. सो बेसिकली कुलभूषण जाधव के केस में, कुलभूषण जाधव के केस में we understand 2016 Kulbhushan Jadhav was apprehended by Pakistan. We understand 2017 India went to ICJ after Pakistan had announced a death penalty for Mr. Jadhav. Death penalty होने के बाद हम कहाँ चले गए? ICJ. उससे पहले ऑब्वियसली हम ट्राई कर रहे थे कि कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं मामला को, लेकिन वो मामला सॉल्व नहीं हुआ. तो वी वेंट टू ICJ. So in this particular instance, we must remember that the case that India made was violation of VCCR, Vienna Convention on Consular Relations. ये केस बनाया इंडिया ने. All right. So basically, ICJ upheld India's position, and thereby what happened in effect was that the death penalty of Mr. Jadhav was suspended. Time मिल गया ना. अदालत जब भी आप जाते हो तो क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. से वो प्रोसेस का फायदा उठाया हमने. 17 to 2019. That is what has happened, and that is basically the best case scenario which was available. But we must understand that ICJ, which was created in the year 1945, is a primary organ of the UN. UN का भाग है ये, right? So what is its role? So basically it has two kinds of roles. One is in contentious cases. कॉन्टेंशियस केसेस, और दूसरा है एडवाइजरी रोल. क्या करता है आईसीजे? ब्रीफली जानने के लिए दो तरह के मामले देख सकता है आईसीजे. वन इज कॉन्टेंशियस केसेस, अनदर इज एडवाइजरी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? यहां पे थोड़ा सा आपको बस सिंपली समझने की जरूरत है. कॉन्टेंशियस केसेस आर लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स. ऑलराइट. सो स्टेट्स मे ब्रिंग देयर लीगल डिस्प्यूट्स to ICJ, and this would fall under the role of the ICJ under contentious cases. So in contentious cases, only states can be a party at the ICJ. किन लोगों का झगड़ा निपटाएगा ICJ? States का, between states. So that is the contentious cases at the ICJ. Advisory role, basically on legal question, the ICJ renders advice to UN and its authorized agencies. ये दो तरह के काम करता है ICJ. पहला लीगल झगड़े निपटाता है किनके बीच में? स्टेट्स के बीच में. दूसरा एडवाइजरी ओपिनियन टू हुम? UN and its authorized agencies. तो अब इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि when contentious cases are involved, these are cases between sovereign states. States are sovereign, meaning they have independence of decision making. So for ICJ to be effective, it should be accessible and it should be accepted by the states. So basically, jurisdiction of ICJ is effective through three mechanisms. One, any number of states by agreement may bring a case to the ICJ. दो sovereigns हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया, they agree with each other that let's take our case to ICJ. हमसे नहीं संभल रहा मामला, let's take our case to ICJ. So that is basically by agreement. More states can bring their disputes to ICJ. Second is called by treaty clause, and third is by
declaration, or it is also called optional clause. All right, इसका क्या मतलब है? पहला, किसी भी डिस्प्यूट को a group of state by their own agreement bring to ICJ. Second, treaty clause. If there is a treaty, what is a treaty? Treaty is an agreement between sovereigns. All right, if there is an international agreement which mentions that in case of any dispute regarding the implementation of the treaty or its meaning, ICJ has jurisdiction. अगर उस treaty में ही लिखा हुआ है और अगर आपने वो ट्रीटी साइन की है तो इसका मतलब क्या है कि आपने लीगल ऑब्लिगेशन लिया है अपने ऊपर, और वो ट्रीटी कह रही है कि आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन है, तो आईसीजे का ऑटोमेटिक ज्यूरिसडिक्शन बन जाता है. ट्रीटी क्लॉज कहते हैं इसको. इस दूसरे तरीके से केसेस आईसीजे के पास आते हैं, ट्रीटी क्लॉज. ऑलराइट, मतलब एक देश कह सकता है कि भाई आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन दूसरा देश वो केस ला सकता है ये कह के कि भाई आपने ये ट्रीटी साइन की है, इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन है. ट्रीटी क्लॉज. तीसरा है डिक्लेरेशन, ऑप्शनल क्लॉज, मीनिंग एवरी स्टेट कैन एक्सेप्ट द कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आईसीजे ऑन इट्स ओन बाय इशूइंग अ डिक्लेरेशन. एक चिट्ठी लिखेंगे आप यूएन को और कहेंगे कि हम आईसीजे के कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं. इसको कहते हैं ऑप्शनल क्लॉज. यानी पहले में एग्रीमेंट से दो या ज्यादा देश जा रहे हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं. दैट वी डिक्लेयर दैट इन केसेस वेयर अदर स्टेट्स हैव आल्सो एक्सेप्टेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे, उस तरह के केस में केस बाय केस डिसाइड करने की बजाय हम कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आईसीजे. इसको डिक्लेरेशन या ऑप्शनल क्लॉज कहते हैं. राइट, कंट्रीज कैन सिंपली डिक्लेयर दैट in those cases where others also accept the compulsory jurisdiction of ICJ, we also accept it. But in this declaration, countries can also create exceptions. Countries are sovereign, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि हम हर उस मामले में जिसमें और देश आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है. ऐसा भी हम लिख सकते हैं उसके अंदर. तो ये इसलिए याद करने की जरूरत है. इंडिया ने डिक्लेरेशन दिया था 1974 में, विच वॉज सुपरसीडेड बाय ए डिक्लेरेशन इन 2019. 2019 में हमने नया डिक्लेरेशन दिया है, अंडर विच वी हैव एक्सेप्टेड कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे इन दोज केसेस वेयर अदर स्टेट्स आल्सो एक्सेप्ट आईसीजे's jurisdiction. But we have created our exception. One of the exception is if a case pertains to a country which is or which has been a member of the Commonwealth. Commonwealth न्यूज में है इस समय. Commonwealth is an organization, all right, which is headquartered in London, which is basically an organization of countries which were part of the British Empire. Earlier, not necessarily, not every member was a British colony, but generally these are the countries. So they have made an organization called the Commonwealth. So India in its declaration, there are many exceptions. One of the exceptions is if there is a case which involves member of a Commonwealth or a country which is or which was a member of the Commonwealth, we don't accept the compulsory jurisdiction of the ICJ. ये किस लिए है? ये पाकिस्तान के लिए है. All right, because Pakistan is a member of the Commonwealth. तो अगर पाकिस्तान कहेगा कि आपने कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट किया, हमने भी किया, चलो ये केस लेके चलते हैं, तो इंडिया कहेगा नहीं, आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन के अंदर हमने ये एक्सेप्शन क्रिएट किया हुआ है एज अ सोवरेन. दैट इज a technicality that you need to keep in mind, and that is basically what is operative here. तो फिर कुलभूषण जाधव केस में किस तरह से हम केस ले गए? कुलभूषण जाधव केस में हमने इस प्रोविजन के अंतर्गत आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक किया. दैट देयर इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस. वो अपने फाइनल सेक्शंस में क्या कहता है कि इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी, देन आईसीजे हैज द ज्यूरिसडिक्शन. तो हमने इस टेक्निकलिटी का इस्तेमाल किया और हमने अपनी इस पोजीशन को डिफेंड भी किया. तो आप जो भी करते हैं वो एक प्रेसिडेंस बन जाता है, इसीलिए उस चीज को करने का कारण क्या है ये आपको समझने की जरूरत है.
So in Kulbhushan Jadhav case, India made the case of treaty clause, wherein India made a case that Pakistan violated Vienna Convention on Consular Relations, and thereby कोई और अगर मामला होगा उसमें पाकिस्तान कहे कि चलो ICJ चलते हैं, तो what would India say? That under our declaration we don't accept the compulsory jurisdiction of ICJ in matters pertaining to Pakistan because Pakistan is a member of the Commonwealth. तो ऐसा होता है, ये सिंपल चीज आपको देखने की जरूरत थी. Let's move on to the next issue, which is primarily the issue of CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. Now, initially when we had started talking about India-Pakistan relations, हमने ये बहुत ही clearly कहा था कि there is a fourth factor which is always important in the case of India-Pakistan relations, which is role of external actors. So largely you can look at CPEC as part of role of external actors, how external actors directly or indirectly affect India's interest in the context of Pakistan. All right. So if you look at CPEC, what is CPEC? Any idea? Initiative of China. So basically, in recent times, what has been making news, and we'll talk about it more when we reach to China, is Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative is a large infrastructure and connectivity project of China. So China basically is saying that we would be investing in land-based infrastructure. So from China's borders to Central Asia to Europe is basically China's aim of creating a land-based large infrastructure. And then China is saying that we would also be strengthening maritime infrastructure in the ocean. So from South China Sea to Southeast Asia to Indian Ocean and to beyond Europe, China is saying that we will be building, we will be investing in ports and other infrastructure projects in the maritime domain. So China का ये इस समय का recent एक important project है. All right. Simple terms, why would China like to do that? A, this is part of China's economic strategy, because Chinese economy had built up a lot of surpluses, cement, steel, उतना बना लिया जितनी आपकी जरूरत नहीं है, export market भी नहीं है, तो आप कहाँ उसको खपाएंगे? दूसरा, you have currency surpluses, so where would you invest it? तीसरा, चाइना की नजर किन चीजों पे है? चाइना की नजर basically how can it create shorter and efficient trade routes connecting some of its underdeveloped regions. So China के कुछ provinces हैं जो गरीब हैं, है ना? चाइना में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. So some provinces of China are underdeveloped. So China wants to connect them efficiently with the rest of the world. And China wants a shorter access to the Indian Ocean region. China wants a shorter access to the Indian Ocean region. So ये China के कारण है, इसलिए वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज अ टेंजेंट, अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड काशगार. काशगार को काशी भी कहते हैं. दिस इज अ चाइनीज सिटी. ऑल राइट, दिस इज अ चाइनीज सिटी. It starts from Kashgar, passes through Pakistan, and it terminates at the Gwadar port on the Indian Ocean coastline of Pakistan. So that is basically the tangent of the CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, starting in Xinjiang province. Ab Xinjiang province is a troubled province of China. All right, आपने बहुत सारा अखबार में पढ़ा होगा Uyghurs. All right, so basically Uyghur is a ethnic group which is basically primarily they adhere to Islam, right? So they are a prominent minority in China, and they are prominently located in the Xinjiang province, whose capital is Kashgar. So on the one hand, China has adopted a strategy of reforms, that we will reform people by suppressing any
public expression of religion. All right. And secondly, China has adopted the strategy that we would link these kind of provinces to international markets so that there is economic development. वो चाइना की अपनी strategy है, right? पाकिस्तान को problem नहीं होती है Uyghurs की problem से, but Pakistan is always keen on raising issues pertaining to India. All right? Again, ये सब common चीज है, होता रहता है, but this is the tangent. So if we look at CPEC, CPEC is a project worth around 65 billion US dollars. 65 billion US dollars worth of project hai, meaning China has said that it would be investing 65 billion US dollars in Pakistan. What would they do? They are creating highways, they are creating railways, they are creating power stations, they are creating grid lines, they are creating waterways, they are creating industrial townships, they are creating a port at Gwadar. They are enhancing a port at Gwadar. So basically, it's a package deal of infrastructure investments. That is what China has said that it would be doing in Pakistan. ठीक है, इससे फायदा क्या है? चाइना को अपने फायदे हैं, पाकिस्तान का क्या फायदा है? पाकिस्तान इकोनॉमी is an economy facing its own challenges, liquidity crisis, high inflation, high unemployment, so thereby lower capital investments. So that is Pakistan's problem. So Pakistan may benefit from this infrastructure. Does India have a problem with that? No, India does not have a problem with Pakistan becoming prosperous. हम चाहेंगे पाकिस्तान जो है prosperous बन जाए, क्योंकि देखो जब आप नौकरी करने लगते हैं, जब आप प्रॉस्परस होने लगते हैं, तो आपको अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगता है, तो फिर आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता. अगर आपके पास काम ही नहीं हो तो फिर बाकी चीज़ों में ध्यान लगाने के लिए आपके पास बहुत टाइम है ना. मतलब आप अब पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप इंडिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो. तो हम चाहते हैं पाकिस्तान प्रॉस्परस बन जाए. दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, बट आवर प्रॉब्लम इज लार्जर स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द CPEC. तो क्या प्रॉब्लम है इंडिया का CPEC से? Yes. So number one issue is the violation of India's sovereignty. That is what India's objection to CPEC is, and that is what India's objection to BRI is. That CPEC is part of BRI. CPEC passes through Gilgit-Baltistan, which is part of Jammu and Kashmir, which for India is an integral part of the Indian Union, and hence it violates India's sovereignty. Number one problem, and perhaps the most important formal problem. By implication, what are the problems that India visualizes with CPEC? Number two problem is possibility of regional instability. It may create, CPEC may create regional instability. मतलब क्या है? So अभी आप देखेंगे बलूचिस्तान, in Pakistan, Balochistan, abduction of a military official, bomb blasts. So Balochistan is witnessing an insurgency. Many people in Balochistan believe that traditionally Balochistan has been exploited. People of Balochistan have not been adequately treated in Pakistan. And B, now they believe that the CPEC project, including the Gwadar port, is not creating employment for Baloch, local people, but it is a project in which mostly Chinese people or people from other provinces of Pakistan are employed. So right now, the Baloch insurgency is also targeting CPEC, and the Pakistan's military is trying to quell that insurgency, suppress that insurgency. So the second fear is that differences with CPEC and the prevailing circumstances in provinces like Balochistan may create regional instability. Larger regional instability is the concern. And the third concern is that the Gwadar port, which is the terminus of the CPEC, may be used for non-commercial purposes. Given the close military entanglement between Pakistan and China, CPEC may be used for non-commercial purposes, meaning in the future it can be used for military
purposes. So thereby it would provide China a foothold in the Indian Ocean region close to India. China Indian Ocean country nahi hai. China is not an Indian Ocean country. But by using the Gwadar port and close relations with Pakistan, China now has reached close to India's coasts. So that is basically how a third actor plays out in India-Pakistan relations. कुछ लिख लेते हैं इसके ऊपर, काफी उदास चेहरे नजर आ रहे हैं. So let's write something on this. UPSC has asked a question on this in paper 3, internal security. All right, पेपर 3 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे. सो जब हम आईआर में इसको देखते हैं तो हम थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में जाने की कोशिश करते हैं. राइट, सो प्लीज लेट्स राइट समथिंग ऑन सीपीईसी. द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और सीपीईसी. द चाइना पाकिस्तान, आप सीपीईसी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फुल फॉर्म में दिया हुआ है तो आप आंसर में भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, है ना. शॉर्ट फॉर्म लिखने का रूल क्या होता है कि जो वेल नोन चीजें हैं उनका शॉर्ट फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट, जो वेल नोन चीजें उनका शॉर्ट फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट, ओके. द सीपीईसी इज पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. द सीपीईसी इज पार्ट ऑफ China's Belt and Road Initiative. It aims at, the CPEC is part of China's Belt and Road Initiative. It aims at investing 65 billion US dollars. It aims at investing 65 billion US dollars for creating infrastructure projects, running through Pakistan, infrastructure projects running through Pakistan, connecting Kashgar in China, infrastructure projects running through Pakistan, connecting Kashgar in China to the Gwadar port in Balochistan, to the Gwadar port in Balochistan. This includes construction of highways. This includes construction of highways, railways. This includes construction of highways, railways, waterways, highways, waterways, power plants, transmission lines, power plants, transmission lines, and industrial townships, On the one hand, the project is seen as part of China's expanding. On the one hand, the project is seen as part of China's expanding economic and strategic footprints. On the other, it is
it is considered to be an important support. It is considered to be an important support to Pakistan's failing economy. To Pakistan's failing economy. However, from India's perspective, the CPEC presents, from India's perspective, the CPEC presents the following concerns. The CPEC presents the following concerns. One, passing through Gilgit-Baltistan, the CPEC projects violate India's sovereignty. The CPEC projects violate India's sovereignty. Two, the CPEC and related Chinese investments, are entrapping, the CPEC and related Chinese investments are entrapping Pakistan in a debt trap, thereby strengthening China's stronghold on the country, Thirdly, domestic fault lines in Pakistan are evident. In opposition to Chinese dominance, at the cost of local interests. Such a scenario may lead to regional instability, as is evident. Such a scenario may lead to regional instability as is evident in the ongoing insurgency in Balochistan, Fourthly, the port at Gwadar
provides China a strategic. The port at Gwadar provides China a strategic foothold in the Indian Ocean. The port at Gwadar provides China a strategic foothold in the Indian Ocean region. And given in the Indian Ocean region, and given the close ties between Islamabad and Beijing, and given the close ties between Islamabad and Beijing, it may be used for military purposes. It may be used for military purposes. तो हमने 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, there is no singular reason as important as violation of sovereignty, because of which India opposes the CPEC. So violation of sovereignty should always be your first point. पहला point आपका violation of sovereignty ही होना चाहिए. Second point, what is happening in Pakistan-China relations? So regionally, you look at Pakistan as part of South Asia, and because of Pakistan, because of China's involvement, what is happening? So many in Pakistan also argue कि अब Pakistan जो है is a subservient state to China, right? Because China now controls the economic levers in Pakistan. So basically that strengthens China's ability to influence Pakistan's policy. And related to that is, there is opposition within Pakistan to China's projects, that they are expensive, interest rates are high, right? So that means that within Pakistan's polity, there is a certain degree of incongruence, and at the extreme it is evident in violent instances of attacks on Chinese facilities, attacks on Pakistan's military in Balochistan. बलोचिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है, तो हमारे हिसाब से देखो कुछ लोग कहेंगे कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, पर देखो सीक्रेटली जो चीजें करनी है वो आंसर पे आप नहीं लिख सकते. आप ये कभी नहीं कह सकते कि भारत को, इंडिया को इंसर्जेंसी जाके सपोर्ट करना चाहिए. ये आप सोच सकते हैं, ये अट्रैक्टिव लगता है बहुत सारे लोगों को, है ना, बहुत सारे लोगों को जेम्स बॉन्ड का ऑप्शन अच्छा लगता है, पर वो जेम्स बॉन्ड का एग्जाम नहीं है ना. तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको, तो हम क्या कह रहे हैं, ये रीजनल कंसर्न है हमारा भाई, कि तुम्हारे घर के झगड़े से हमारे बॉर्डर तक बात पहुंच जाएगी अगर तुमने ठीक से नहीं निपटाया. तो हम कह रहे हैं बलूचिस्तान में वायलेंस बढ़ेगा, जिससे रीजनल इंस्टेबिलिटी का खतरा है. और चौथा पॉइंट, इट इज प्रोवाइडिंग चाइना अ डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशन. चाइना इंडियन ओशन कंट्री नहीं है. टुडे यू आर सेइंग दैट दिस पोर्ट इज कमर्शियल, पर आपके रिश्ते ऐसे हैं कि पता नहीं चलता क्या कमर्शियल है क्या मिलिट्री है. तो टुमारो क्लोज टू आवर कोस्ट देयर मे बी अ चाइनीज सबमरीन डॉक्ड, देयर मे बी चाइनीज वॉरशिप्स, देयर मे बी डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज सोल्जर्स. ऐसा हो सकता है. हम हमेशा IR में ये कह रहे होते हैं, ऐसा हो सकता है. कभी ये मत सोचना कि ये हम कह रहे होते हैं कि ऐसा होगा, है ना, ऐसा हो सकता है. हम नहीं जानते, आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप केवल व्यापार करना चाहते हो, पर हमें कैसे पता. So in international relations there is always something called security dilemma, right? Any step taken by one country to enhance its own security may create insecurity for the other. तो हम मानते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते. इंटरनेशनल रिलेशंस में आप भरोसा नहीं कर सकते. तो आप देख रहे हैं कि पास में पोर्ट बन रहा है, इन दोनों के रिश्ते ऐसे, हमारे रिश्ते खराब हैं, तो आगे चल के ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, ये हम कह रहे हैं. सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू इंडिया, इतना ही कह सकते हैं हम. सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू इंडिया. एक ऑप्शन तो मैंने आपका ले लिया कि इंसर्जेंसी प्रमोट करने की बात मत करना, वो अजीत डोवाल साहब को करने दो. कल्चरल एक्टिविटी ठीक है, बट अब यहां पे क्या कल्चरल एक्टिविटी करेंगे, राइट? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट देर आर 3 things primarily that India can do. One, please write, in this context it is necessary, in this context it is necessary
that India should, it is necessary that India should raise its objections. India should raise its objections regarding CPEC at all appropriate forums. India should raise its objections regarding CPEC at all relevant forums. At all relevant forums. So diplomatic option. आप हमेशा अपना कंसर्न वोकल रखिए ताकि आप रोक तो नहीं सकते लेकिन आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ना कि हम आप इतनी आसानी से नहीं होने देंगे. दैट इज व्हाट वी डू at all the platforms. We talk about connectivity and we talk about certain principles. Secondly, India must strengthen its relations. India must strengthen its relations across the Indian Ocean basin. India must strengthen its relations across the Indian Ocean basin and look for opportunities to invest in more projects like the Chabahar port in Iran. India must look for opportunities to invest in more projects like the Chabahar port in Iran. अब हम रोक तो सकते नहीं चाइना को ग्वादार में इन्वेस्ट करने से. तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दैट वी शुड स्ट्रेंथन आवर रिलेशंस. हमारा कोस्ट लाइन तो है ही, तो वहां पे तो हम जो करना हम करेंगे ही, बट वी मस्ट स्ट्रेंथन आवर रिलेशंस विद अदर्स इन द इंडियन ओशन रीजन एंड आइडियली वी मस्ट ऑल्सो ट्राई एंड expand our logistical footprint. तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी क्या है, the Chabahar port in Iran we are investing. That is one port where we are investing. ऐसा नहीं कह सकते कि वो पोर्ट हमारा है, पोर्ट तो ईरान का है, पर our investments basically are providing us an opportunity to enhance our footprint. देश के बाहर भी हम कुछ कर रहे हैं. And Chabahar is very close to the Gwadar port, right? Around 80 kilometers is the distance between Chabahar and the ग्वादार पोर्ट. तो ये दो चीजें हमको करनी है डिप्लोमेटिकली. सीपीईसी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शंस है, वेर एवर देर इज एन अपॉर्चुनिटी वी मस्ट रेज इट. वेर एवर देर इज एन अपॉर्चुनिटी वी मस्ट रेज इट. एंड सेकेंडली, लार्जर जो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो उससे निपटने के लिए हमें जरूरी है दैट वी एक्सपैंड आवर कैपेसिटी इन द इंडियन ओशन रीजन एंड वी इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स लाइक द चाबहार पोर्ट. और कोई ऑप्शन है इंडिया के पास? काउंटर अटैक विद वियतनाम. हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कहां तक बनाएंगे? एशियन कंट्रीज, आसियान. वो पॉइंट पाकिस्तान में नहीं लाते हैं. वो पॉइंट जब हम चाइना या साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर रहे होंगे ना, वो अलग रीजन है, तो वहां पे हम लेके आएंगे. अभी हम एक बहुत ही स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं, ग्वादार पोर्ट, चाइना का एक्सेस, पाकिस्तान के थ्रू चाइना कैसे इफेक्टिव कदम उठा सकता है इंडिया के खिलाफ और उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, है ना. तो सीपीईसी का क्या ऑब्जेक्शन है, सीपीईसी में क्या प्रॉब्लम है और सीपीईसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या ऑप्शन है. बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है. वो लार्जर स्ट्रैटेजी है चाइना के खिलाफ, दैट इनहैंस कोऑपरेशन विथ वियतनाम. क्यों? बिकॉज सम पीपल कॉल वियतनाम इंडियाज पाकिस्तान फॉर चाइना. जैसे चाइना और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं, वैसे ही इंडिया और वियतनाम के संबंध बहुत अच्छे हैं, और वियतनाम और चाइना के संबंध उतने अच्छे नहीं है, इसलिए वो संबंध हमको बढ़ाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं. तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, बट वो लार्जर चाइना स्ट्रेटजी होगी. दूसरा ऑप्शन आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी कॉरिडोर कहां तक बनाना है? आसियान देशों तक.
वो भी सही आइडिया है। वो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का एक तो आइडिया कि आप चाइना जहां भी इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे लगा रहा है, लोगों को पैसे की जरूरत है, इसलिए लोग चाइना का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप केवल बातों से पैसे का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप भी इन्वेस्ट कीजिए, तो वो ऑप्शन भी है, बट वो लार्जर चाइना स्ट्रेटजी में आ जाएगा। मोर इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीलैटरल फोरम लाइक क्वाड, वो भी सही ऑप्शन है, वो भी सही ऑप्शन है, एक लार्जर ऑप्शन हो गया आपका क्वाड। इफ यू लुक एट क्वाड एज अ बैलेंसिंग एक्ट अगेंस्ट चाइना, तो वो ऑप्शन भी आ सकता है। तो आप लार्जर ऑप्शंस में जा रहे हैं, बट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में ये दो ऑप्शंस, सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में ये दो ऑप्शंस जो हैं वही हैं इंडिया के पास, वही हम करते हैं। अरे ये दो चीजें, हम बलूचिस्तान में जाके कुछ नहीं कर सकते, है ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कुछ नहीं कर सकते, ये दो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए उनसे रिलेटेड पॉइंट नहीं लिखा हमने, राइट। बट लार्जली जो आप बातें करें वो दे फॉल इन मेजर कैटेगरी ऑफ ईदर कॉन्टेस्ट और कॉम्पीट विद चाइनाज इन्वेस्टमेंट्स, चाइना के इन्वेस्टमेंट के साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट सिंगुलरली कॉम्पीट नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, कैसे, पार्टनरशिप से। ऑलराइट, सो पार्टनर विद क्वाड, पार्टिसिपेट in multilateral forums like Quad, और invest more in your neighborhood, ये भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, राइट, रिलेटेड ऑप्शंस हैं। नाउ the other issue that we will look at is the issue of FATF, Financial Action Task Force. So Financial Action Task Force has been in news because of द केस ऑफ पाकिस्तान। हम इतने इंटरेस्ट से क्यों देखते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में अखबार एफएटीएफ के बारे में छापने लगते हैं, हर 3 महीने में देखना एफएटीएफ कवर होता है। क्यों हर 3 महीने में कवर होता है? हाँ, बिकॉज एफएटीएफ की एक मीटिंग होती है जिसको कहते हैं प्लेनरी। सो प्लेनरी मीटिंग्स टेक प्लेस एवरी 3 months. So we are simply talking about an organization, all right? FATF as an organization which has been in news in the context of Pakistan, right? So if you look at FATF, first things first, it was created in the year 1989. Where is it located in terms of headquarters? Paris. So the FATF was created by rich countries of the world, जिनके पास बहुत पैसा था, जिनका बहुत ट्रेड था। अब उनको लगा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इज थ्रेटेंड बिकॉज द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरकनेक्टेड, है ना। तो जैसे पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना है आपने? सुना ही होगा, क्राइम में बहुत इंटरेस्ट होता है लोगों का। सो पाब्लो एस्कोबार वॉज अ ड्रग ट्रैफिकर फ्रॉम कोलंबिया इन साउथ अमेरिका। एक सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, नार्कोस। सो दैट मैन अर्न सो मच ऑफ मनी दैट ही डिड नॉट नो वेयर टू कीप इट। तो बैग्स में, पॉलिथीन में, ड्रम्स में, जमीन के नीचे नोट उनको गाड़ने पड़ रहे, इतनी कमाई हो रही है ना। दे आर प्रोड्यूसिंग ड्रग इन कोलंबिया, कोकेन मेनली, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग इट टू यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका वाले बाजार, अमेरिका में पैसा बहुत आ रहा है। अब पैसे का क्या करें? बैंक पे रखेंगे तो लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, और बंडल के बंडल नोट आप जमीन पे छुपा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, नोट खराब हो रहे हैं। तो अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग भी तो है ना, कि वो जो पैसा आपके पास आया वो आप दिखाओ कि आपने एक्सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल के थ्रू आपका पैसा वाइट होके आपके पास आ गया। पाकिस्तान का केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क्स। इफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री इज वीक, देन इट कैन बी टारगेटेड बाय those who are interested in money laundering, and money laundering basically is an act of making your black money, transforming your black money into white money, illegally generated money into legally generated money. So that is something that was very clear, evident, it is happening. So group of countries, G7 जो नाम सुना है आपने, G7 countries came up with the idea of creating such an institution which would create a
recommendations, regulations to make financial transactions secure, international financial system secure, and then it will work with countries for the implementation of these recommendations. एक टेक्निकल बॉडी के रूप में G7 ने FATF का फॉर्मेशन किया. सो दैट इज वेयर यू वुड सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. क्या मैंडेट है, क्या करता है ये? So basically it acts against certain kinds of activities. Initially when it started, the idea was that this is a body that would help in preventing money laundering. पहला तो money laundering. After 2001 में क्या हुआ? 9/11, US was attacked. So now terror financing became an important issue. किसके लिए? For the US. US is a powerful country. उसने चाहा कि ये important मुद्दा बने तो ये बना. So second major area in which the FATF is active is preventing terror financing. And then in recent times there are other areas like preventing proliferation financing, meaning arms and ammunition का जो इलीगल ट्रेड है, टू प्रिवेंट फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन, राइट? इलीगल ट्रेड ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड एनी अदर रिलेवेंट थ्रेट, टू द integrity of the international financial system. This is what the FATF deals with. So FATF is an intergovernmental agency. Intergovernmental meaning governments participate. Primary participants are governments. It's an intergovernmental agency which develops rules and recommendations to effectively deal with money laundering, terror financing, proliferation financing and any other relevant threat to the integrity of the international financial system. इन सारे मसलों से जुड़ी हुई टेक्निकल बॉडी है FATF. प्राइमरी काम क्या है इसका? रिकमेंडेशंस डेवलप करना एंड देन असेसिंग अ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, लॉज, इंस्टीट्यूशंस in terms of their effectiveness in dealing with these kinds of challenges. So एक कंट्री के साथ काम करते हैं, उनका स्टेटस असेस करते हैं एंड देन इफ देयर इज अ वीकनेस दे हेल्प देम इन इंप्रूविंग दैट पर्टिकुलर वीकनेस. ये इनका काम है. सो इट्स प्राइमरली अ टेक्निकल बॉडी. नाउ if you look at the activities of FATF, you must understand that first of all it has certain important members. All right, so how many members does the FATF have? 37. Very good. 37 members, 37 countries are members of the FATF. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सिंपल डिटेल्स आपको पता होना जरूरी है. एंड देन यू हैव द यूरोपियन यूनियन and the GCC, Gulf Cooperation Council, as organizations which are part of the FATF. इनको कहा जाता है jurisdictions, right? 37 countries, 37 members are called jurisdictions. To be a member of the FATF, you need to be an important financial center globally. हर देश इसका member नहीं है, right? So at the outset, remember, FATF के साथ पाकिस्तान को हमेशा जोड़ के देखोगे तो ये गलती करोगे कि FATF का मेंबर उसको बता सकते हो. पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द FATF. सो बेसिकली इन असिस्टिंग द वर्क ऑफ द FATF, अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, whosoever is the member of the FATF, there are certain groups which are called FSRBs, FATF style regional bodies. FSRB क्या है? FATF style regional bodies. There are 9 FSRBs. 9 FSRBs हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरह ही हैं बट रीजनल लेवल पे काम करते हैं. इनको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लाइक, FATF लाइक रीजनल बॉडीज. ऑल राइट. सो बेसिकली
9 of them क्या हम याद करेंगे? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 1 द यूरेशियन ग्रुप एंड 2 द एशिया पैसिफिक ग्रुप. ये क्या है? एफएटीएफ स्टाइल रीजनल बॉडीज. तो बेसिकली बाकी का जो एफएटीएफ का काम है या एफएटीएफ के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना है या देशों के साथ काम करना है, वो कहां पे हो रहा होता है? रीजनल बॉडीज में. दीज रीजनल बॉडीज हेल्प द एफएटीएफ इन एडवांसिंग इट्स पर्पसेस, राइट? सो वी विल रिमेंबर इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 2 एफएटीएफ स्टाइल रीजनल बॉडीज. दीज आर कॉल्ड यूरेशियन ग्रुप and Asia Pacific group, and Pakistan is a member of Asia Pacific group. पाकिस्तान किसका मेंबर है? एशिया पैसिफिक ग्रुप. सो पाकिस्तान का जो मामला है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप में देखा जा रहा है. सो बेसिकली व्हेन द एफएटीएफ इन द कोर्स ऑफ इट्स activities is looking at the institutions, laws and regulations of any country for determining what are called स्ट्रैटेजिक वीकनेसेस, स्ट्रैटेजिक डिफिशियंसीज. क्या कोई कमी है जिसकी वजह से ये देश टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वल्नरेबल है, ये देखने की कोशिश कर रहा है. तो ये होता है कैसे? एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं म्यूचुअल रिव्यू. सो एवरी कंट्री सबमिट्स इट्स ओन प्रिपेयर्डनेस टू डील विथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एटसेट्रा. सो म्यूचुअल रिव्यू हो गया. कुछ वीकनेसेस आपको वहां से पता चल जाएंगी, और फिर उसके बाद रेगुलरली म्यूचुअल रिव्यूज से अगर कमियां पता चल रही हैं लॉज में, इंस्टीट्यूशंस में, इंप्लीमेंटेशन में, तो फिर एक बॉडी है एफएटीएफ के अंदर, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप. So now from the review of the status of countries, some countries are recognized which may have significant strategic deficiencies. क्या आइडेंटिफाई कर रहा है एफएटीएफ? सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक डिफिशियंसीज. कहीं कोई लॉ नहीं है, कहीं इंस्टीट्यूशंस में कमी है, कहीं पॉलिटिकल विल नहीं है चीजों से डील करने का. सो दैट इज व्हाट द एफएटीएफ इज डूइंग. सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप देन वर्क्स विथ सच कंट्रीज विच हैव सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक डिफिशियंसीज, राइट? सो आईसीआरजी ये प्रोसेस कर रहा है. अब इसमें 2 मेजर कैटेगरी ऑफ jurisdictions आर आइडेंटिफाइड. 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ jurisdiction. वन, जिसको बहुत प्यार से आप लोग कहते हैं ब्लैक लिस्ट. एफएटीएफ के अंदर ब्लैक लिस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है, ये मीडिया ने पैदा किया है. सो एफएटीएफ की जो ब्लैक लिस्ट है या एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है, इसका क्या मतलब होता है? दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. नाउ एफएटीएफ हैज पब्लिकली आइडेंटिफाइड कंट्रीज विथ significant strategic deficiencies in their laws, their institutions, or their political will in combating with money laundering or terror financing. And they are now working with the FATF to remove those deficiencies. So blacklist countries, you can simply understand them as non-cooperative countries. These are countries which are non-cooperative. इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. कंसिस्टेंटली म्यूचुअल रिव्यू में आइडेंटिफाई किया वीकनेस, काम करने के लिए कहा गया, लेकिन इनको काम नहीं करना है एफएटीएफ के साथ. सो दे आर नॉन कोऑपरेटिव. ऑलराइट, सो इनको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शंस अंडर कॉल फॉर एक्शन. यानी अब एफएटीएफ ने कह दिया है अपने मेंबर से that you need to take action against these countries. Jurisdiction under call for action. This is what blacklist is known as in the FATF parlance. FATF इस तरह के देशों को आइडेंटिफाई करता है जिनका कंडक्ट रेगुलरली, कंसिस्टेंटली नॉन कोऑपरेटिव रहा है. दे हैव स्ट्रैटेजिक डिफिशियंसीज बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क. सो इसी को कहते हैं ब्लैक लिस्ट. एंड जनरली इनको कहते हैं कंट्रीज अंडर कॉल फॉर एक्शन. किस तरह के देश आपको यहां पे लगातार देखने को मिलेंगे? ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये आपको लगातार इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे. अब ये ग्रे लिस्ट है. ग्रे लिस्ट सिंपली अंडरस्टैंड इज नॉन कंप्लायंट कंट्रीज इन सिंपल टर्म्स. नॉन कंप्लायंट का मतलब फॉर एनी रीजन
they are not up to the standards of what FATF recommends, right? Their performance, their laws, their institutions are not up to the standard of FATF recommendation. तो कमी तो किसी में भी हो सकती है, इसका मतलब ये है कि आपको कमी दूर करने की जरूरत है, राइट? सो दे आर नॉन कोऑपरेटिव नहीं है, वो नॉन कंप्लायंट है, दे आर विलिंग टू कोऑपरेट, राइट? नॉन कंप्लायंट कंट्रीज, और इनको टेक्निकली कहते हैं jurisdictions under increased monitoring, jurisdictions under increased monitoring, ये कहते हैं इनको jurisdiction. ये बेसिकली नाम FATF इस्तेमाल करता है. दो तरह के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स रिलीज करता है FATF. In one it identifies jurisdiction under call for action, which is generally colloquially known as blacklist. सेकेंड डॉक्यूमेंट रिलीज करता है jurisdiction अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग. भाई ये क्लास के कमजोर बच्चे हैं, इनके साथ काम करना है, राइट? इन पे विशेष ध्यान देना है. तो ये बेसिकली jurisdiction अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग आर जनरली नोन एज द ग्रे लिस्ट. सो अब आपकी उम्मीद थोड़ा कम हो रही होगी, क्योंकि हर 3 महीने में अखबार जो है ये कहता है कि अब तो पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट हो जाएगा. इतने सालों से तो हमने नहीं देखा कि ब्लैक लिस्ट हुआ. ऑलराइट, सो रिसेंटली क्या हो रहा है पाकिस्तान के केस में? सो पाकिस्तान इन 2012 वाज अंडर द ग्रे लिस्ट. पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था अर्लियर ऑल्सो, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम द इशू वाज मनी लॉन्ड्रिंग. FATF had identified weaknesses in the laws, regulations, institutional mechanisms to deal with money laundering within Pakistan. चलो उससे बाहर निकल गया. In 2018, Pakistan was again put on the grey list. Meaning, grey list का दूसरा नाम क्या है, या फिर grey list का ऑफिशियल नाम क्या है? Jurisdiction under increased monitoring. इन पे ज्यादा ध्यान देंगे. तो इस बार कमी कहां है? एंटी टेरर फाइनेंसिंग रेजीम में. यानी पाकिस्तान इज इन डॉक बिकॉज ऑफ वीकनेसेस इन इट्स मैकेनिज्म्स टू डील विथ टेरर फाइनेंसिंग. ऑलराइट, 2018 the FATF identifies Pakistan as one of the countries with strategic deficiencies in its anti-terror financing mechanisms. And then what happens? So Pakistan prepared an action plan. ऐसा नहीं है कि आपको immediately क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, आपसे कहा कि आप ये लिख के लाओ या आप लिख के लाइए. तो पाकिस्तान से कहा कि what will you be doing? Pakistan prepared an action plan. And then Pakistan was given till 2019 October. है ना? Pakistan was given 15 months to implement its action plan. So what happened? In reviews, 2019 review, FATF said that Pakistan has not completed all of the points on its action plan. All right? Then 2020 came. What happened in 2020? COVID हो गया, तो COVID में तो आधा काम वैसे ही रुक गया. So review of Pakistan's conduct continued. And FATF gave Pakistan an extension to fulfill its own action plan. What is the latest status? Latest status क्या है? अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो यहां पे अखबार का रोल आता है. In the month of June there was a plenary of the FATF. वहां पे Pakistan is considered to be close to fulfilling its action plan, and FATF would basically, in August, FATF would conduct a ground visit. तो फिर से ये मुद्दा न्यूज में कब आएगा? अगस्त में. Now the FATF has said that before removing Pakistan from the grey list, what they will do is they would go and visit, their team would go and visit to actually check on certain aspects of Pakistan's action against terror financing. तो तभी आप देखोगे पाकिस्तान in the recent past has acted against Hafiz Saeed,
अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई, पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर मसूद अजहर, कि भाई मसूद अजहर कहाँ छुपा हुआ है. So that is what Pakistan is doing, because one point on which Pakistan was lagging was taking action against leading figures involved in terror financing. ये एक point पे पाकिस्तान की बात अटक रही थी. तो पाकिस्तान has shown some progress on this particular aspect. So there is no possibility that Pakistan is going to be relegated to blacklist, because Pakistan has prepared an action plan, FATF has reviewed it, given it time, and now FATF has proposed a ground visit on which it would determine, on the basis of which it would determine whether Pakistan continues in the grey list or Pakistan is out of the grey list. Blacklist तो नहीं हो सकता, because that's basically part of the consistent behavior. हम चाहेंगे blacklist हो जाए, we would want it, but it is not in our hand. It's a political decision. All the members of the FATF have to take that decision together. In 2018 also, when Pakistan was put in grey list, it is basically because we got the support of United States and France and UK. So that is where Pakistan was put under the grey list. So this is a very difficult political, basically a political decision. Right? कोई automatic criteria नहीं है कि आपने ये नहीं किया तो आप blacklist में चले जाएंगे. It's political. So far Pakistan has been in grey list. Now we will remember a few things. इससे दो तीन चीजें याद रखें. सवाल पाकिस्तान के बारे में नहीं आएगा, सवाल किसके बारे में आएगा? FATF के बारे में आएगा. 2022 is also India's review year. इंडिया का FATF रिव्यू 2022 में होना है. वो रेगुलर प्रोसेस है, म्यूचुअल रिव्यू कहते हैं उसको. हमने अभी तक यही सीखा ना, एक बार रिवाइज कर लो. दैट FATF is an intergovernmental agency. It was created in 1989. It is located in Paris. It has 37 members. Is India a member? Yes, India is a member. What is the mandate of the FATF? FATF is a technical body which develops recommendations to deal with money laundering, terror financing and proliferation financing, as well as any relevant threat to the integrity of international financial system. ये करता है FATF. Now FATF ये करता कैसे? So first of all, with the help of its members, which are basically major centers for financial transaction in the international economy. So India is a member of FATF. Pakistan is not a member of the FATF. So where does Pakistan lie? Pakistan is part of a regional body. So there are 9 FATF styled regional bodies which help FATF in fulfilling its mandate. So that is where the review of Pakistan etc. takes place. So India is a member of 2 FATF styled regional bodies, Eurasian Group and APG. It is also member of the main FATF. Alright. Pakistan किसका member है? Asia Pacific Group का, जिसका India भी member है. Now what happens is, once FATF has developed recommendations, it would like its adoption in national legislation, institutions. तो उस स्टेटस को लगातार जांचते रहना जरूरी है, whether a country is ready to deal with the threats to international financial system or not. So that happens through mutual review process. From mutual review, what is identified is what are called strategic deficiencies. In what? In mechanisms to deal with money laundering, terror financing. Strategic deficiencies are identified. Now most serious cases have to work with what is called International Cooperation Review Group of the FATF. इनके साथ काम करना है ना. अब आप आइए, इनके साथ काम कीजिए, अपना प्लान बताइए, प्लान को रिव्यू कराइए. सो ICRG प्रोसेस में आ गए. इस केस में FATF issues 2 sets of public documents, identified countries with significant strategic deficiencies in their anti-money laundering, anti-terror financing regimes. Right? One category of country is generally called as blacklist. Blacklist countries are basically non-cooperative countries which have not made any progress and have not cooperated with the FATF. So this is called jurisdictions under call for action. And the second category of countries is generally called the grey list. Grey list is those countries who have
strategic deficiencies, but they are willing to work with the FATF. So they are non-compliant but not non-cooperative, and they are technically called jurisdictions under increased monitoring. So when a country is identified in the grey list, what happens is a country is given an opportunity to improve its performance. कि अपना काम सुधार लो. All right. Now that is where Pakistan has been in grey list since 2018 for deficiencies in its anti-terror financing regimes, and it has prepared an action plan which has been under review since 2019, and Pakistan has been found to have not fulfilled all its obligations of the action plan so far, but it has made some progress. So the latest status is Pakistan has completed by and large all the items on its action list barring one item, and now in August the FATF would conduct a ground visit to Pakistan to determine its status. So when we say call for action, what kind of action can FATF take? So basically FATF's significance lies in naming and shaming. All right. A country would cooperate with FATF because every country today is part of the international financial system, right? Now every country also needs external financial support. So where do you go? पाकिस्तान अभी कहाँ जा रहा है? IMF के पास. चाइना के पास तो जा ही रहा है, पर IMF के पास कर्ज चाहिए आपको. So basically it depends on your international credit worthiness. So if FATF identifies a country as a call for action country, it can call upon its members to closely scrutinize any financial transaction emanating from the grey list country or the blacklist country. It may also then signal to its members to take preventive action against the country. So basically एक तरह से economic isolation का खतरा है. And then this signaling also has an impact on credit rating of a country. Every country has its own credit rating, है ना? Moody's और बहुत सारे जो credit rating agencies हैं, they give credit ratings to countries. So if your credit rating is bad, you would not be able to mobilize finance for your own development. So that's the impact of the FATF in naming and shaming. When FATF is identifying one country, then it is signaling to the international system, be careful, scrutinize financial transactions with these countries, and also it's a signal to the credit rating agencies which may devalue the credit rating of any country like Pakistan. So that's why countries cooperate with FATF, because it is now widely recognized as the main standard setting agency when it comes to the integrity of international financial system. यही impact है. वो कान पकड़ के खड़े होने को नहीं बोल सकता FATF, मुर्गा नहीं बना सकता, बैन नहीं लगा सकता, ये सब नहीं हो रहा है, पर अपने मेंबर से कह रहा है कि कार्रवाई करो. ये देश है जिसके लिए सावधान रहो. ऑल राइट. और उसका इम्पैक्ट क्या है कि आपकी इमेज खराब होती है, और अगर आपको अपनी इमेज की चिंता है तो आप, क्योंकि आपका इमेज डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप FATF के साथ काम करो. अब पाकिस्तान ने FATF के साथ काम किया है, और FATF के ऊपर है ये डिसाइड करना कि अब पाकिस्तान का क्या होगा. तो अखबार चाहे जो भी कहें, प्रोसेस ये है. ऑल राइट. इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन FATF or CPEC or any other matter in the content? कोई क्वेश्चन नहीं है? थक गए आप लोग? FATF समझ में आ गया? ऑल राइट. हाथ खड़ा करेंगे, देखने में आसानी होगी. Killing? What would Pakistan gain from killing Jadhav? First of all, Mr. Jadhav is an unfortunate individual who is caught between tense relations between two countries. So it is not about Mr. Jadhav per se, but what Mr. Jadhav represents. Pakistan wants to make a case or an example out of Mr. Jadhav because India has been fairly successful in presenting Pakistan as a locus of terrorism, or calling out Pakistan for its role in promoting terrorism.
right? We had decided that we would internationally, diplomatically isolate Pakistan. So now with Mr. Jadhav, पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है, पाकिस्तान भी कहता है कि भाई इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन बलोचिस्तान, ऑल राइट. और व्हेन इंडिया वाज एक्टिव इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू इट. So by targeting Mr. Jadhav, Pakistan is getting to target India's image. Pakistan is trying to say that India also promotes subversive activities in Pakistan. Right? So that is basically what Pakistan intends to gain. It basically would like to make this case against India and showcase that Mr. Jadhav is an Indian operative. And basically India is promoting subversive activities in Pakistan. तो ये पाकिस्तान का गेम प्लान है, that basically we would be able to portray Mr. Jadhav and through Mr. Jadhav India in a negative light. उनकी जान लेकर के ऐसा कोई फायदा नहीं है, लेकिन the larger import symbolism of the case is that. All right, तो hopefully ऐसा नहीं हो. होपफुली हम ये उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद थी मिस्टर इमरान खान वुड रिलीज मिस्टर जाधव. उसके बाद वो एक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में हमेशा ऐसा होता है कि थोड़े दिन, देखो जब भी वायलेंस होगा तब तो कोई बात नहीं होगी, ये तो बहुत ही क्लियर है. पर अगर एक लंबा पीरियड ऐसा बीते, इफ देयर इज अ लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम विदाउट एनी मेजर इंस्टेंस ऑफ टेररिज्म और वायलेंस, सूनर और लेटर यू वुड फाइंड देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान शुड निगोशिएट. तो पीछे कोई नहीं हटेगा, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी तब इस तरह की ओपनिंग आती है. तो पाकिस्तान को अगर सद्बुद्धि आती तो वो ये कहता कि चलो वी वांट पीस एंड द स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी वी आर रिलीजिंग मिस्टर जाधव ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. तो ऐसा करने पे हो सकता है कि एक ओपनिंग बन जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात को. दूसरा, कई बार आप देखोगे इस पीरियड के अंदर भी अखबारों में यही छपता रहा है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बाजवा, द पाकिस्तानी आर्मी जनरल, गेव अ स्पीच. उसमें से एक लाइन निकाली अखबारों ने और कहा कि द आर्मी जनरल हैज सेड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शुड रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस. सो बातचीत की संभावना है, ऐसा हर अखबार कहता है. फिर इन 2021 फरवरी इंडिया एंड पाकिस्तान हैड रिन्यूड देयर सीज फायर एग्रीमेंट. तो बातचीत, पॉलिटिकल स्पीचेस सुनते रहोगे तो नहीं समझ पाओगे फॉरेन पॉलिसी, है ना. इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन रैलीज में जो स्पीचेस होती हैं वो सुनते रहोगे तो फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ पाओगे, वहां पे फॉरेन पॉलिसी नहीं बन रही है. सो टेंशन है, लेकिन फिर भी हमने एक कोशिश की, सीज फायर एग्रीमेंट किया. एंड देन मेनी पीपल आर आर्ग्यूइंग, मैंने पहले भी ये कहा है शायद इस क्लास में, दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. बैक चैनल्स में समथिंग इज हैपनिंग, कोई ना किसी तरीके की बातचीत चल रही है. ऐसा बहुत सारे जगह पे लोगों ने लिखा है, उनका क्या बेसिस है हमें नहीं पता. कुछ लोगों का कहना है कि विद द मीडिएशन ऑफ यूएई देयर इज सम सीक्रेट टॉक्स गोइंग ऑन. सो इफ देयर इज प्रोग्रेस इन सीक्रेट टॉक्स, देन वन इंपैक्ट ऑफ दैट वुड बी वी मे सी फेवरेबल आउटकम इन द केस ऑफ मिस्टर जाधव. ऑल राइट, सो सर्कमस्टांसेस के आधार पे अभी ये केस अटका हुआ है. होपफुली थिंग्स इंप्रूव बैक चैनल में भी और आगे की बातचीत में भी. बट नाउ द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी मैनेज रिलेशंस विथ पाकिस्तान. ऑल राइट, बिकॉज ये सारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं होने जा रहे, ये कंटिन्यूइंग इश्यूज हैं. इनसे क्वेश्चंस आएंगे, either location based questions or FATF based questions, so on and so forth. But Pakistan, India Pakistan relations जो है is not going to drastically change overnight. Apart from humanitarian basis. So second way is very clear that Pakistan's civilian courts decide on the merit of the case and exonerate Mr. Jadhav. कोर्ट्स के थ्रू वो रास्ता जाता है ना. तभी इंडिया बार बार कह रहा था कि न्यूट्रल या तो वकील रखने दो या इंडियन वकील रखने दो. जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा मुझे.
No, the matter is not now in the International Court of Justice. Matter was in International Court of Justice. International Court of Justice gave its judgment in 2019. What did the International Court of Justice say? One, Pakistan has violated Vienna Convention on Consular Relations. So Pakistan is wrong. इस चीज को तय किया ICJ ने. दूसरा क्या कहा? What is the remedy? So the remedy is that immediate consular access must be provided by Pakistan. What is the third thing that ICJ added? ICJ added and basically urged, ये थोड़ा weaker recommendation था, that effective reconsideration and review of Mr. Jadhav's case must be permitted. ये तीन चीजें कही थी ICJ ने. तो उसमें क्या चल रहा है? पाकिस्तान ऑफर्ड कॉन्सुलर एक्सेस, इंडिया वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो कुछ समय तक वो मामला चला. अभी क्या चल रहा है प्रोसेस? रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ मिस्टर जाधव्स केस इन पाकिस्तान कोर्ट्स. ऑलराइट, तो कोर्ट के अंदर मामला है पाकिस्तान के. तो एक तरीका तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि पॉलिटिकल लेवल पे ये हो कि भाई वी आर रिलीजिंग, और दूसरा तरीका जो है जो अभी चल रहा है वो ये है कि इन कोर्ट्स effective defense is mounted and Mr. Jadhav is exonerated by the courts of Pakistan. ये दो तरीके हैं. इसके बाद मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि तीसरा तरीका हमारे पास एट द मैक्स है कि हम ICJ चले जाएं फिर से, ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया है आपका जजमेंट. जजमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए ICJ जा सकते हैं, और जो अगला कदम उठा सकते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल जा सकते हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान ने अगेन कि पाकिस्तान ने ICJ के जजमेंट को फॉलो नहीं किया. वो केस बनाना पड़ेगा हमको. यूनाइटेड नेशंस में रिजॉल्व होंगे? नहीं, कैसे करेंगे भाई? जब एक देश अड़ गया कि हमको यही करना है, आप यूनाइटेड नेशंस में कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे? मतलब एक व्यक्ति के मुद्दे को आप यूनाइटेड नेशंस में नहीं बना सकते. और ICJ इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये आप क्यों भूल रहे हैं? ICJ इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. दूसरा तरीका है सिक्योरिटी काउंसिल जाना. तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी हम बहस करा सकते हैं, बात करा सकते हैं, लेकिन वहां पे जो अल्टीमेट डिसीजन होना है वो सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन के हिसाब से होना, जिसमें चाइना परमानेंट मेंबर है ना. वो वीटो करेगा कि नहीं करेगा हमको पता नहीं, पर अभी तो वहां तक मामला गया नहीं है. अभी मामला कहाँ है? पाकिस्तान के कोर्ट में. तो दो तरीके अभी मेजर दिखते हैं हमको, या तो एक पॉलिटिकल डिसीजन हो ऑन द बेसिस ऑफ whatever reasons to release Mr. Jadhav, या तो फिर एक जुडिशियल जजमेंट आए पाकिस्तानी कोर्ट से to release Mr. Jadhav, which would improve the circumstances, right? That is what we are hoping for. रोग स्टेट क्यों? अमेरिका की टर्मिनोलॉजी में आपको जाना, पाकिस्तान भी टर्म्ड एज रोग स्टेट, एक्सिस ऑफ इविल, इस तरह की कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है. America defines certain states as rogue states, for example, Iran, North Korea, Libya, Iraq, axis of evil, rogue state. तो रोग स्टेट कोई टेक्निकल कैटेगरी नहीं है कि मैं कह दूं कि क्या पाकिस्तान को आप रोग स्टेट, आप कहना चाहते हैं रोग स्टेट तो आप कह दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. ऑलराइट, इज पाकिस्तान एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेट? in certain sense, yes, insofar as it harms India's interest, yes, it is a irresponsible state. Is Pakistan a rogue state? Yes, depending on what do you mean by rogue state. कोई टेक्निकल कैटेगरी नहीं है ये अमेरिका ने अपनी फॉरेन, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने कह दिया एक्सिस ऑफ इविल, तो वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और लोग भी. तो अब ये इसका कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं कहने का. पर आप अगर कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि इज इट एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेट, so looking at our relations with it and the way Pakistan harms our interest, yes, of course the answer is yes, Pakistan acts irresponsibly, right? तो आपकी श्रद्धा पे है, if you want to call Pakistan a rogue state or any other state, right? So basically how to manage relations with Pakistan. Is the major concern that we should have. ये सारे इश्यूज में हमने देखा कि बातचीत हुई है, समाधान की संभावना है, इट कैन बी रिजॉल्व, बट देयर इज ऑलवेज अ बिग बट. एंड वी फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि देयर आर स्ट्रक्चरल रीजंस फॉर इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल factors. We understand that these factors cannot be
easily resolved. ये factors आसानी से resolve नहीं किए जा सकते. Another way in which we can visualize improvement in India-Pakistan relations is changes within Pakistan. दूसरा तरीका क्या है? या तो ये structural factors resolve हो जाएं. What are the structural factors? Differences in narratives. ये हमने बात की थी, याद है आपको? Domestic politics, role of external actors, all right, so on and so forth. Changes in Pakistan strengthening डेमोक्रेसी. ये दूसरा तरीका है कि पाकिस्तान चेंज हो जाए. अब पाकिस्तान चेंज हो जाना भी हमारे हाथ में नहीं है. कुछ चीजें समय के हाथ में, कुछ चीजें पाकिस्तान के हाथ में. तो टोटल मिला के बात यह है कि इस रिलेशन के कॉन्टेंशियस इश्यूज को रिजॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है. सो वी कैन ऑलवेज सेफली एज्यूम दैट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म द पैटर्न इन दिस रिलेशनशिप वुड होल्ड. यही होगा, जो होता रहा है वही होगा, अनलेस कुछ चमत्कार हो जाए. वो मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो हमारे हाथ में है नहीं. बाय डेफिनेशन चमत्कार हमारे हाथ में नहीं है. सो चेंजेस इन पाकिस्तान स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. व्हाट डज इट मीन? सो मेनी पीपल हैव आर्ग्यूड दैट इफ पाकिस्तान becomes democratically stable, its politics would start focusing on the real issues of the people, है ना, rather than talking about religion or rather than talking about India. The focus would be on employment, unemployment, poverty, health, etc. People would ask their government to be accountable, and maybe the governments in Pakistan would be able to understand that by cooperating with India, it can achieve its common goals. For example, a few years back, Prime Minister Modi also from the Red Fort had said that I invite Pakistan to fight with poverty and unemployment with India. हमको आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमको ये कॉमन प्रॉब्लम से लड़ने की जरूरत है. तो ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा हो सकता है. पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट. बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि डेमोक्रेसी है तो उसमें क्या है कि लोगों को अपने मुद्दे रखने का मौका मिल रहा है. आप सभी डेमोक्रेसी में रहते हैं, आपको पता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है वो, पर आइडियली हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है. अब ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ब्रॉडली इमेजिन करना है इश्यूज को पाकिस्तान के साथ, और आइडेंटिफाई करना है कि हमें हमेशा एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के साथ. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड विद पाकिस्तान इज अ टूल किट ऑफ ऑप्शंस. अब ये टूल किट भी काफी चर्चित रहा है, लोगों ने काफी इस शब्द पे डिबेट किया. टूल किट का सिंपल मतलब है every household has a tool kit. You have screwdriver, plier, hammer in a tool kit. घर में जो भी छोटा मोटा बिजली का काम होता है, कोई भी काम होता है, आप टूल किट रखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, उसमें अलग अलग चीजें. टूल किट ऑफ ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड टू डील विथ पाकिस्तान, टू मैनेज रिलेशंस विथ पाकिस्तान. ये मतलब है इसका. ऑल राइट. सो एट एनी पॉइंट इन टाइम, गिवन द फैक्ट that the structural factors can't be changed and domestic changes in Pakistan are not in our hands, we can think of managing relations in a context specific manner with Pakistan. So toolkit of options. What kind of options are we talking about managing relations? As I said, depending on the circumstances. So one category of option can be persuasive. Another category of option can be coercive. स्टूडेंट बहुत डरते हैं क्या लिखे क्या नहीं लिखे. दोनों लिखो, दो तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है हमेशा. सो ईदर यू हैव सॉफ्ट पावर ऑप्शन, बहुत ही लूजली इन टर्म्स को इस्तेमाल करना, सॉफ्ट पावर ऑप्शंस, एंड और यू हैव हार्ड पावर ऑप्शंस. राइट. व्हाई डू वी नीड परसुएसिव ऑप्शन? सो बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन परसुएसिव ऑप्शन to create a space for peace. That is our objective at all times, that we want peace. Why hard power option? To basically impose cost
on Pakistan's misdemeanor. All right, if Pakistan is acting against India, then we need to impose cost on Pakistan's behavior. Pakistan अगर कोई एक ऐसा काम करता है जिससे हमारा नुकसान होता है तो हमको ये क्लियरली कन्वे करने की जरूरत है दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्री. ऑलराइट, आपको भी कीमत चुकानी पड़ेगी. सो इम्पोज कॉस्ट ऑन पाकिस्तान एक्शन. सो व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस कैन वी टेक ब्रॉडली? ये ऑप्शन है व्हेन पॉसिबल, जब जरूरत हो, जब संभव हो, तो ये ऑप्शन अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं. और ये ऑप्शन है व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो. हार्ड पावर व्हेन नीडेड, सॉफ्ट पावर व्हेन पॉसिबल. जब भी संभव हो हम सस्ता ऑप्शन एक्सरसाइज करने की कोशिश करें. सस्ता मतलब लीस्ट कॉस्टली बिहेवियर. ऑलराइट, वेन एवर पॉसिबल, जब पॉसिबल है. तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ लें कि हम अब बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मैनर में ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है ना. ब्लैंकेट तरीके से बात नहीं कर रहे हैं. तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा. इफ योर कॉन्टेक्स्ट इज करेक्ट देन योर सॉल्यूशंस आर नॉट रॉन्ग. सो देन व्हेन पॉसिबल व्हाट शुड वी डू? वी शुड वर्क ऑन communication, meaning we should promote dialogue at all levels between governments, between relevant actors in the military, between people, right? So government to government, people to people, business to business, military to military. पॉसिबल अगर है तो कम्युनिकेशन को, डायलॉग को प्रमोट करें. ऑल फॉर्म्स ऑफ डायलॉग शुड बी प्रमोटेड अगर जहां भी पॉसिबल है. दूसरा, प्रमोटिंग एक्टिविटीज लाइक ट्रेड. ट्रेड को क्यों प्रमोट करना है? बिकॉज मेनी पीपल आर्ग्यू दैट नवाज शरीफ परहैप्स is a better option for India in Pakistan in recent times. Why? Nawaz Sharif is a businessman, and business community in Pakistan understands that they gain from doing business with India. All right, and what would a businessman want? Stability. Business करने वाले को क्या चाहिए? शांति, stability. वॉर से उसका फायदा नहीं है, unless आप हथियारों का ही व्यापार करते हो तो फिर अलग बात है. So that is why it is understood that, you know, if we promote trade, what would happen? It would create constituencies for peace in Pakistan. हम वहां पे ऐसे लोग तैयार होंगे जो इस बात को समझें कि इंडिया के साथ अच्छा संबंध रख के फायदा है, नुकसान पहुंचा के फायदा नहीं है. So that's why promoting trade और promoting cultural exchanges. What would happen by promoting cultural exchanges? Yes, we can enhance trust in the relations. But you see, we are culturally very similar. Our Saas Bahu daily opera is very popular in Pakistan also. और कई उनके टीवी प्रोग्राम देख लो तो वो भी देख के लगता है कि भाई इंडिया के हिसाब से ही बने, हर घर में यही हो रहा है. ऑल राइट, पाकिस्तानी म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. इंडियन सिनेमा इज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान. वो बैन लगा देते हैं, जैसे बजरंगी भाईजान एक मूवी आई, पाकिस्तान ने बैन लगा दिया. So that is the impact of culture. ये लोगों को बताता है कि भाई केवल दुश्मन नहीं है, वो लोग भी हमारे जैसे. यूट्यूब पे कई वीडियोस ऐसे देखोगे जिसमें लोग माइक उठा के पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ पीपल इन इंडिया. पाकिस्तान के अंदर लोग वीडियो बना रहे हैं और इंडिया के अंदर भी लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, है ना. तो जनरली लोग अच्छी बातें कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि सभी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, पर अगर आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, है ना. अगर आप केवल जहर उगलते हुए वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा. वो आपके फिर फीड में वही आना लगेगा कि दुनिया में गलत के अलावा कुछ नहीं हो रहा, है ना. बट अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे कि हाँ, पीपल हैव द एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट ईच अदर, एंड व्हेन वी मेक देम अवेयर ऑफ कल्चरल सिमिलैरिटीज देयर इज मोर पॉसिबिलिटी दैट पीस वुड हैव अ चांस. फॉर एग्जाम्पल, अभी गूगल कर लो, यू विल फाइंड एन 85-year-old Indian
lady is in Pakistan visiting her home, है ना? Then there was a case of a small kid from Pakistan. She had some injury in childhood because of which her head was tilted 90 degrees. So an Indian surgeon in Delhi operated upon that particular kid. तो ऐसा बहुत होता है पाकिस्तान, जैसे when Mrs. Sushma Swaraj was the External Affairs Minister, people from Pakistan used to tweet and medical visas were issued. So पाकिस्तान से कोई आके यहाँ जब इलाज कराता है हॉस्पिटल्स में, वो देखता है कि भाई इंडिया के बारे में जो हमको बताया गया केवल वैसा नहीं है ना? इंडिया इज अ मच मोर एडवांस कंट्री, लोग अच्छे हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स अच्छे हैं हमारे पास. तो बेसिकली इस तरह की खबरें भी आपको मिल जाएंगी ना. पीपल आर कमिंग फ्रॉम फॉर देयर ट्रीटमेंट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. तो देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज who have familial relations across the borders. All right? सानिया मिर्जा एक prominent example हो गए भाई. सानिया मिर्जा, शोएब मलिक. There are other familial relations also, right? Historically ऐसा रहा है. So when you focus on these aspects of relations, what is happening is you are humanizing the relationship. आप ह्यूमनाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप को. केवल स्टेट टू स्टेट लेवल में बात करते रहेंगे तो कई बार बहुत सारी बातें इग्नोर हो जाती हैं. सो कल्चरल एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज में ऑल्सो सॉफ्टन द ग्राउंड. इट इज क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पीस. ये मेजरली आप कर सकते हैं. प्रमोट डायलॉग एट ऑल लेवल्स वेन एवर पॉसिबल. प्रमोट ट्रेड वेन एवर पॉसिबल, ऐसा नहीं कि हमेशा. और प्रमोट कल्चरल एक्सचेंजेस एंड पीपल टू पीपल टाइज. ये हो गई अच्छी बात. अब हो गया हार्ड पावर ऑप्शन. क्या है आपके पास? वो तो बहुत सारा है. ऑल military preparedness has to be maintained at all times. Military preparedness has to be maintained at all times. Militarily आपको prepare रहना पड़ेगा. Strengthen your border. Better management of border is always required. So military option has to be always there. All right. And then you have, अब MFN status तो revoke कर ही लिया, तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन देने के लिए इकोनॉमी का कोई बचा नहीं. बट working for diplomatic isolation of Pakistan, diplomatically isolating Pakistan. So whatever forum is relevant, we may use it to diplomatically isolate Pakistan. So generally what you would see, Security Council में बात हो रही है terrorism के बारे में, तो we would make it a case कि हम दुनिया को बताएं Pakistan is the epicenter of terrorism. So diplomatically that is something that we do. Diplomatically call out Pakistan or diplomatically try and isolate Pakistan. What else? Raise the issue of human rights violation in Balochistan. Insurgency promote mat karo, but we are basically put out by Pakistan continuously talking about human rights in India or parts of India. So then we have Pakistan also with its own problems. So raise the issue of human rights violation in places like Balochistan prominently. If it hurts Pakistan, well, you do it whenever it is needed. Similarly, हमको क्या करना चाहिए? हमको regularly बात करनी चाहिए किसके बारे में? गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में. बिकॉज पाकिस्तान इज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गिलगिट बाल्टिस्तान इनटू इट्स 5th province. So we should, as Ambassador Shyam Saran says, we should act as though Gilgit Baltistan belongs to us. है ना? केवल नक्शे में दिखाने से नहीं होता, हमें ऐसे काम करना चाहिए, ये मान के काम करना चाहिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है. राइट? सो ईदर इशूइंग वेदर बुलेटिन for Gilgit Baltistan or criticizing Pakistan for CPEC passing through it, or any other occasion, we should talk about the people of Gilgit Baltistan, the rights of people of Gilgit Baltistan. ये कदम हमें लगातार उठाने की जरूरत है जब भी प्रेशर पुट करना हो पाकिस्तान पे. और कोई ऑप्शन? हाई
दैट इज ऑलरेडी देयर ना. वी हैव रिवोक्ड MFN स्टेटस, जो पाकिस्तान को दिया था हमने रिवोक कर लिया और इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी. तो वो तो है ही, वो जब नहीं हो तब आप यूज कर सकते हैं, पर वो तो है ही ऑलरेडी इस समय. बट मेजरली इस तरह के ऑप्शंस आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. और कुछ कहना है? और जिनको ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे हो वो क्या करें, एक बार पाकिस्तान का चैप्टर पढ़ लें. अफगानिस्तान का उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ता है तो हमको अफगानिस्तान से रिलेशंस बढ़ाने चाहिए. बट मेजरली रिमेंबर, जो बात हमने की है, इट इज अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस, टू कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस. वन इज सॉफ्ट पावर ऑप्शंस व्हेन पॉसिबल, जब भी संभव हो सॉफ्ट पावर ऑप्शंस टू प्रमोट पीस. व्हेनेवर नीडेड हार्ड पावर ऑप्शंस टू इम्पोज कॉस्ट ऑन पाकिस्तान मिसडिमीनर और पाकिस्तान मिस एडवेंचर. पाकिस्तान पूरा हो गया, अब हम आराम से जा सकते हैं नेबरहुड के और इलाकों में. सो अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश वुड बी द एम ऑफ नेक्स्ट लेक्चर. अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. If you have any questions, I am here. If not, in an organized fashion, one by one, please leave, go wherever you want to go, do whatever you want to do, but be responsible, be healthy, come back to the class.